ये वाला खुला रहना चाहिए, स्पीच देने के लिए ये ऑफ है। ठीक है ऐसे रहना है ना। ठीक है स्पीच देने के टाइम में अलग टाइम को ऑफ है तो वो पुट कर देगा, लेकिन स्पीच टाइम में जब वो जैसे देगा इसको देख लेना कि कौन सी स्पीकर जो भी बैठा हो कौन नहीं जो भी हो ना देगा उसका Owner address. Vinay মই এছেম্বলিতে বহিছোঁ এছেম্বলি Attendance. না মই একেলগে কথা পাতি মই পাতি You may देखो last assembly. हम लोग को सब थैंक यू। बड़े भाई के साथ चलो देख प्रसाद ने लास्ट असेंबली हम किस देगा दीजिए फिर वापस आना है ना वापस आएगा ना, क्यों नहीं? हम किस देगा गैस मार्जिन को ही देंगे। नहीं ये लास्ट असेंबली है ना मेमोरी के लिए। नहीं समझा, मिलते नहीं हमारा मेमोरा के लिए मेमोरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और पेट खोलिए। हम लोग सबको किस देगा हाँ गुड मॉर्निंग। चलिए मैडम आप ही आ रहे सबको नीचे देगा जिन्होंने फोटो तो मुझे दिया ना है स्पेशल कर दिया। तो कम से कम फोटो ही हम लोगों को भी जरूर सर इचुते तो कवर है तो उला उली कवर है तो Honorable members, His Excellency Governor of
minute ako tayo. Nanti ulit. Hello. Morning, honorable members. I'm privileged to welcome the honorable governor to the 13th session of 7th Legislative Assembly, the first session of the year of 2024. Honorable governor will address the House under Article 176(1) of Constitution of India. Now I request honorable governor to address the August House. Very good morning to all honorable members present in the Assembly. Honorable Speaker and honorable members of the Legislative Assembly. Jai Hind, and my warm welcome to all the honorable members to this 13th session of the 7th Legislative Assembly of Arunachal Pradesh and the first session of the year 2024. At the outset, this being the election year, let me start by expressing my best wishes to the honorable members of the Assembly for the ensuing Assembly elections. As we participate in the festival of democracy in the coming months, I am sure your good work and dedication to public service will be recognized by the people. In this regard, we have witnessed the transformational development and rapid progress of the country under the visionary and globally acknowledged leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and the progress made by our own state in leaps and bounds in all the sectors under the dynamic and energetic leadership of Shri Pema Khandu ji. The mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas or Sabka Prayas of the Honorable Prime Minister has inspired my government, ably led by Shri Pema Khandu ji, to toil and strive towards contributing to the vision of Viksit Bharat. As we may recall, the nation successfully tackled the unprecedented challenges posed by once-in-a-century COVID-19 pandemic through not only an integrated surveillance and response mechanism, but also the swift development of vaccines and mounting the world's largest vaccine administration program for its citizens for free, besides supplying vaccines and medicines to many nations globally as a gift from the people of Bharat.
With a whole of society approach, including cooperation of the honorable MLAs, PRI members, community-based organizations, youth associations, NGOs, spiritual and religious leaders, the excellent leadership of Sri Pema Khanduji, and collective efforts of the health department under the able health minister resulted in the state recording amongst the lowest mortality rates in the country, with a recovery rate of consistently being over 99%. It pleases me to say that our focus areas of development are very well aligned with the Saptarishi development priorities to guide our state during the Amrit Kal, thus providing a blueprint for an empowered and inclusive economy under our youthful Chief Minister Shri Pema Khanduji and his team Arunachal. As we have seen, they are following the Antyodaya approach for ensuring the benefits of development reach the last mile and the last person in the state. The last 8 years have been a never-seen-before era for Arunachal Pradesh, where my government has made historic, transformational, systemic and structural changes that have improved the lives of all our citizens, especially benefiting the poor, the women, the youth and the farmers. Governance reforms and prudent financial management. Honorable Speaker and honorable members, our guiding pillars, governance reforms and prudent financial management, is aligned with the financial sector guiding pillars of Saptarishi. It is with a sense of pride I inform that under the very deft and skillful leadership of the Honorable Deputy Chief Minister and Minister of Finance, Planning and Investment, with guidance and support from the Honorable Chief Minister, our state has made a quantum jump on the economic development front through fast-tracking governance reforms and prudent financial management. They have ensured that more resources are spent on socially useful and economically productive investments, while not defaulting on any commitments in terms of loan repayments, salaries, and wages and pension rules. Overseen the increase of 137% in the state annual budget. Overseen increase in state's own resource by nearly 172% from 1,253 crores to 3,412 crores. Implemented electronic government receipt accounting system for e-GRAS from 22-23 and enhanced autonomy of Panchayati Raj institutions or PRIs by devolving 29 subjects and keeping our commitment of allocating 10% of our own tax revenues to PRIs, providing 123 crores in 22-23, 143 crores in 23-24. They have reformed the Arunachal Pradesh Staff Selection Board or the APSSB, adopted environmental or climate-tagged budgeting after historic Pake declaration, introduced the national pension system, including extending it to autonomous bodies and societies, sought suggestions from community-based organizations and general public for the state general budget preparation, partnered with many reputed institutions like the Lal Bahadur Shastri Academy, Mussoorie, IIM Shillong, IIM Calcutta, NISG Hyderabad, NISAC Shillong, and NID Ahmedabad, etc. Published the state's first startup policy and published the state's first logistic policy under the PM Gati Shakti framework. As a result of these significant efforts, during the last 7-8 years, gross state domestic product GSDP increased about 136% from 20,373 crores in 15-16 to 48,028 crores in 23-24. APSSB is also ISO 22IQ KMO2 certified for its fail-safe processes and has facilitated employment of more than 2,800 citizens in a fair, objective and transparent manner.
Ratio of women participation in panchayats stands at a commendable 47.34%. 66 startups have been incubated, with Arunachal being adjudged a top performing state by the Government of India. And the state has moved up in logistic ease across different states or leads ranking. Investment in health sector. Honorable speakers and honorable ministers, members, our guiding pillar, investment in health sector, is aligned with the inclusive development guiding pillar of the Saptarishi. My government, taking up the priorities of Honorable Chief Minister Shri Pema Khanduji, has brought about unprecedented development in the health and education sectors, with the annual budget being themed out these sectors in financial year 2021 and 21-22 respectively. In the fight against COVID-19, we established 63 COVID care centers, 35 dedicated COVID health centers, 2 dedicated COVID hospitals, and 60 ICU beds in the shortest possible time. We took up the challenge of establishing oxygen-supported beds starting from nil and reaching 1,565. Ensured that all district hospitals have medical oxygen pipeline connected beds, oxygen concentrators, and oxygen cylinders, and ensured that the CHCs and PHCs have oxygen concentrators and oxygen cylinders, besides establishing 49 pressure swing absorption oxygen generation plants, including 27 from the PM CARES Fund in the most adversarial monsoon weather conditions. As a result of these interventions, the state managed to maintain a COVID recovery rate of over 99% and did not face any oxygen crisis, with no deaths occurring due to oxygen shortage. My government turned the pandemic crisis into an opportunity, with the Honorable Chief Minister Shri Pema Khanduji and his team taking up the challenge of creating much needed healthcare infrastructure in the state. Let me highlight some of these. Establishment of the first medical college of the state, the Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences, or TRIMS, with the first batch of our MBBS doctors passing out in the last academic session. Further upgradation of TRIMS with inauguration of Hospital Block 2, equipped with a state-of-art emergency and trauma center, modern OPDs, a new 46-bed private cabin, a 22-bed ICU, a 11-bed HDU, and a 3-bed isolation ICU, a cutting-edge 3-TELSA MRI, the first of its kind in Northeast, and a full-fledged cardiology department with cath labs, intensive coronary care units. Opening of a 250 capacity women's hostel. The 108 ambulance service was launched on 21 June 2021. The International Yoga Day, and more than 200 ambulances are deployed under the emergency response ambulance services. Introducing hospital management information system, telemedicine for remote consultations, and telemanas for mental health. All district hospitals, 40 CHCs and 6 urban PHCs are connected online mode, and 40 PHCs on the offline mode. 2 state hubs for telecom consultations have started at TRIMS Naharlagun and BPGH Pasighat, with registration of 318 spokes, including 226 sub-centers, 78 PHCs, and 4 urban PHCs. Upgradation of 60 PHCs/CHCs, 1 each in every constituency, into Golden Jubilee PHCs and CSCs, with provision of basic IPHS standard equipment. The 15 Finance Commission health grants have also helped my government in strengthening the field level diagnostic services and building less sub-centers. 10 block public health units have been established, 109 CHCs and PHCs provided with diagnostic equipment to perform 44 number of tests, 376 sub-centers with diagnostic tools to carry out 13 mandated tests
and 26 health facilities supplied with human papillomavirus HPV for cervical cancer screening for women above 35 years of age. 203 lab technicians have been trained to handle and operate the latest diagnostic equipment. Honorable members, my government has launched the Chief Minister's Health Emergency Life Protection Services, or the CM HELPS, initiative to transform emergency care processes in the state. Around 100 health personnel have been trained in emergency and critical care under the CM HELPS, and mobile medical vehicles, oxygen, express vaccine carriers, and patient transport ambulances are now operating in all districts under the CM HELPS. The Chief Minister's Arogya Arunachal Yojana has so far covered 1,39,724 families with over 5,94,000 individual members, and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has so far enrolled 44,963 families with over 1,19,000 members. Together, the two health assurance schemes cover more than 6.1 lakh citizens in the state, and nearly 30,000 patients have availed tertiary health care benefits under these schemes, with our aim being coverage of all eligible beneficiaries to achieve universal health coverage in the state. Nearly 10,000 newborn girls have received benefit under the Dulari Kanya scheme, with an additional 715 covered under the Golden Jubilee Daughters Initiative. 9 drug addiction and rehabilitation centers are now functional, with a total capacity of 240 beds, and nearly 3,700 addicts have been treated in these facilities. Ayush infrastructure strengthening has received a major boost under my government. The establishment of 250-bed integrated Ayush hospital at Likabali and Balukpong are under progress. 68 Ayush OPDs are now co-located at health facilities, and 49 Ayush health and wellness centers have been made functional. 5 Panchakarma units are being established at various locations for providing holistic treatment to the people. The human resource gap in the health sector has been reduced from 34% to just merely 6%, and the number of medical personnel available in the state are adequate and aligned to IPHS norms. The Chief Minister Renal Replacement Society provides aid to patients suffering from chronic renal diseases, and approximately 17 crores have been provided to patients suffering from chronic and renal diseases. However, to further reduce the hardships of the patients who go out of the state for renal transplantation, the Health Department has signed an MOU with Sir Gangaram Hospital, New Delhi, to establish a Center for Excellence for Renal Sciences at TRIMS, with a view to carry out renal transplantation in the state itself. Under the free diagnostic scheme, 8 lakh individuals have benefited from around 50 lakh tests done. As a result of significant infrastructure and human resource augmentation, Arunachal Pradesh has made commendable progress in various key health indicators as per the National Family Health Survey reports. The state child complete vaccination coverage rate has increased significantly from 71.4% to 76.4%. Antenatal checkup in the first trimester have increased from 36.9% to almost 53.1%, and institutional deliveries have increased significantly from 52.2% to 79.2%. Sex ratio has increased from 958 to 997 females per 1,000 males. The infant mortality rate of the state has reduced significantly from 22.9% in 1516 to 12.9% in 2021 as per the NFHS data, which is the highest reduction of IMR in the country during this period.
Similarly, neonatal mortality rate has also reduced from 11.8% in 15-16 to merely 7.7% in 2021 as per the NFHS. Honorable members, we have seen Shri Pema Khanduji's team has transformed the healthcare landscape of the state such that within the Amrit Kal, we will achieve zero nutritional poverty, full coverage of child immunization, universal access to quality health care, including thorough health insurance, paving the way for physically, mentally, and spiritually healthy and happy residents. Investments in human capital. Honorable Speaker, honorable members, our guiding pillar, investment in human capital, is aligned with the youth power guiding pillar of the Saptarishi. My government envisions a future with accessible and quality education and learning available for all. Through the focused approach of Honorable Chief Minister and his team, including dedicating the year 2021 to education, my government has established 3,600 government schools under the Sarva Shiksha Abhiyan while closing zero enrollment schools. The services of 900 contractual teachers were regularized salary of eligible teaching and non-teaching staff enhanced by 22% for improving motivation and teaching. We have adopted and implemented National Education Policy 2020 recommendations and included tourism, hospitality and IT as vocational education courses in 99 government higher secondary schools and 70 government secondary schools. We have taken up the initiative to publish study books in local languages, integrated the National Scholarship Portal NSP and Public Financial Management System, becoming one of the first states to do so, and launched the Chief Minister's Golden Jubilee Merit Award for those who get admission into IITs, IIMs, AIIMS, NLUs, and introduced Aadhaar-based enrollment of students for correct data management. Towards building the education infrastructure, the state has invested rupees 1,000 crores under Mission Shiksha during the year of education 2021-22. Established Sainik School at Niglok in East Siang and Tawang. Initiated setting up Arun Gyan Kendra, a digital corner in our libraries for leaders. Installed modern technologies such as Atal Tinkering Lab, Vocational Lab, Digital Library, Smart Classrooms, etc. Operationalized Vidya Samiksha Kendra to monitor performance of teachers and progress of students, one of the first 5 states to do so. We have established new Arunachal Pradesh State University at Pasighat. We have made 50 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas operational and established 480 early childhood care centers and created assets like girls' hostel, boys' hostel, residential quarters, besides overall infrastructure development in many schools. The result of my government's effort in developing the education sector are seen as follows. Improved female literacy rate from 57.7% to 71.3% since 15-16. Reduced school dropout rate from 9% to 2.3% in the past 7 years, falling much below the national average of 12.6%. 90% schools that have teachers posted as per norms and more than 1.1 lakh students are receiving stipend and scholarships. 1.3 crores have been dispersed to 67 successful aspirants to IITs, AIMMS, IIMs and NLUs. To further improve the required infrastructure for quality education, my government is upgrading 50 government schools to Golden Jubilee schools, where all facilities will be available with a combined special investment of rupees 500 crores from the Union Government. Besides, 12 Eklavya model residential schools are being set up
with a budget of rupees 217 crores to improve educational outcomes. The government has also taken up 4 government engineering colleges and 4 government ITIs. Honorable members, through improving quality and outcomes in education, my government aims to achieve 100% net enrollment, literacy, and bring the learning proficiency and overall skill sets of our youth at par with the global standards in the coming years. When we talk of human capital and youth power, we think of the future. But we also need to safeguard and celebrate Arunachal Pradesh's ethnic and cultural diversity. To this objective, the government has the following achievements. Established tribal culture centers in all districts headquarters. Initiated documentation of the diverse traditions of all tribes. Published books including folk tales, hymns, prayers, songs, proverbs, and sayings in the native languages of various tribes. Established indigenous Gurukul schools and acknowledged the role of priests by facilitating them with honorariums and facilitating the celebration of local festivals. I understand we shall be holding an indigenous folk music festival in this month itself to highlight the essence of state's indigenous culture and to promote our rich tapestry of folk song and music. Additionally, my government has decided to host an annual competitive folk songs music festival with participation of all states and union territories in a bid to boost tourism and branding of the state, as well as encourage cultural exchanges under the broader vision of Ek Bharat, Shresth Bharat, which will take our indigenous folk songs and music to a larger audience outside the state. Honorable members, Arunachal is blessed with physically fit young sports stars who have been bringing laurels to the state and adding to our pride. Keeping this in mind, my government has made significantly augmented sports infrastructure in the last 8 years, which includes a 15,000 capacity Golden Jubilee outdoor stadium, 20 multi-purpose indoor sports halls, 7 new national level stadiums, a National Center for Sports Science Research, one of the only 6 in India, 20,700 square meters DK Badminton Academy, and 58 Khelo India centers. The outcome of my government's persistent approach in sports and youth affairs are evident in the results. The Sange Lardin Sports Academy having been recognized as the Khelo India State Center of Excellence for archery, judo, and weightlifting. Arunachal Pradesh getting the opportunity to host prestigious final rounds of the 77th Santosh Trophy National Football Championship, winning a staggering collection of 375 gold, 259 silver, and 266 bronze medals in the last 8 years, and supporting various music, dance, and branded competitive platforms for the youth of this state to showcase their talent and stand on their feet. We shall reach another milestone when the 3rd Film and Television Institute of India is set up in Arunachal. It is with a sense of pride I state that my government was able to bring to life the history of our brave hearts, including the unsung heroes, martyrs, and freedom fighters. Congratulating all those who were involved in the laborious field and academic research to properly document their lives from archival records, I applaud my government's initiative of building a war memorial and 13 state memorial parks to honor the memories and sacrifices of our unsung heroes, martyrs, and freedom fighters. Atmanirbhar Arunachal Pradesh. Honorable speakers and honorable members, our guiding pillar Atmanirbhar Arunachal Pradesh is aligned with the unleashing the potential guiding pillar of Saptarishi again. To become Viksit Arunachal, we must become an Atmanirbhar Arunachal first,
That is why this is one of the key strategic pillars of our vision, where the key sectors must contribute to make the state self-sufficient. In today's knowledge-based world order, innovation and entrepreneurship are the pathways to solve problems and build wealth for the state and its citizens. To briefly mention a few initiatives, we have set up an Arunachal Pradesh Innovation and Investment Park, which has incubated 66 startups to fulfill the dreams of our young innovators. We have launched Deen Dayal Upadhyay Swavalamban Yojana or DDUSY, where 828 entrepreneurs have received financing of rupees 125 crores to set up their dream ventures. Provided training to 570 youth under the Chief Minister's Yuva Kaushal Yojana and National Apprentice Promotion Scheme. We have supported 856 beneficiaries through Chief Minister's Paryatan Vikas Yojana and Chief Minister's Paryatan Shiksha Yojana. Trained nearly 34,000 youth under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and facilitated rupees 342 crore loans to 14,618 beneficiaries under the Pradhan Mantri Mudra Yojana. The agri and allied sectors are primarily sources of livelihoods in our state, and my government is proactively working in our state, and my government is working on increasing the income of farmers, whereby more than 96,000 farmers have been granted access to pre-authorized Kisan credit cards, reaching about 99% of the eligible beneficiaries. More than 1 lakh soil health cards have been issued, covering 93% of the eligible beneficiaries. 4,649 farmers reaped the benefits under Prime Minister's Krishi Sinchai Yojana. With about 93% saturation rate, nearly 1 lakh farmers have received financial support through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, and 2 crude palm oil factories are being established in Lower Dibang Valley and East Siang districts. Our unique initiatives, the Atmanirbhar Yojanas, have proved to be effective and popular amongst the farmers, as we are providing much needed front-ended credit-linked subsidies to these beneficiaries. Till date, we have been able to reach out and support the following: 9,862 beneficiaries under Atmanirbhar Krishi Yojana, 6,500 beneficiaries under Atmanirbhar Bagwani Yojana, 1,058 beneficiaries under Atmanirbhar Matsya Palan Yojana, 1,600 beneficiaries under Atmanirbhar Plantation Yojana, and 1,096 beneficiaries under Atmanirbhar Pashupalan Yojana. The impact of the schemes could be estimated with the results of our states which have been achieved. The total food grain production reached 5,20,777 metric tons. Total pulse production reached 14,831 metric tons. Total oilseed production reached 38,919 metric tons, and oil palm area expansion now covers 4,600 hectares. My government launched Mission Krishi Veer to connect our farmers to our jawans. Till date, 284 metric tons of locally produced fresh fruits and vegetables have been supplied to the Indian Army stationed in the state by our farmers, adding to their income and making them partners in defense of the motherland. In the last few years, the state has opened up new avenues to export agriculture and allied sector products to international markets, thus integrating farmers with global supply chains and enhancing their incomes. Arunachal Pradesh Agriculture Marketing Board and Messrs. Lulu Hypermarket LLC, Dubai, have signed a 5 years MOU during the World Food India 2023 to promote export of agriculture and allied sector products from the state in the international market, and oranges from Dambuk can now be seen in Dubai hypermarket. Similarly, a MOU has been signed between
Chirodar Organic FPC, Anjawad Specific Sciences Private Limited, Nagpur, for export of organic black cardamom from the state, resulting in export of rupees 50 lakhs worth during the year 22-23. APAMB has further plans to export 50 metric tons of buckwheat to Asia Pacific regions in the current season. Honorable members, my government has made substantial progress in empowering rural workforce. Recognizing the importance of sustainable livelihoods, Arunachal has issued 3.11 lakh job cards through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Manrega, ensuring employment opportunities for rural households. Distributed 500 vehicles under Arunachal Gramin Express Yojana, sanctioned 36,376 and constructed 19,299 houses under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, whereas 4,938 houses have been completed out of the 6,892 houses sanctioned under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. We have provided 49,247 LPG connections to BPL beneficiaries under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, constructed 10,084 toilets under Swachh Bharat Mission Phase 2, which led to Arunachal being declared an open defecation free state in 2017. We have registered 13.82 lakh beneficiaries under National Food Security Act, provided and is still providing free rations to 1.5 lakh beneficiaries under Antyodaya Anna Yojana, provided 4,50,000 plus metric tons of rice grains to 8,40,000 plus beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, and generated 8,200 employment opportunities through 1,025 new projects under the Pradhan Mantri Employment Generation Program. In addition, my government's commitment towards women-led development has translated into supporting about 1.8 lakh pregnant women, lactating mothers and children covered through 6,225 Anganwadi centers, setting up 250 mothers' kitchens across the state wherein SSGs are involved, mobilizing over 85,000 women into more than 9,300 self-help groups, and earmarking 50% of eligible scheme benefits for women in self-help groups. SSGs have in fact been a key partner of development for the state, for whom my government has done the following: earmarked 50% of Atmanirbhar schemes. 336 SSGs have been benefited under these schemes till date. Trained over 1,100 SSGs, equipping them with the necessary skills and knowledge to thrive. Facilitated credit linking with over 2,900 SSGs, getting rupees 33 crores bank credit, and registered 164 self-help group enterprises with 1,081 members under the PM formalization of Micro Food Processing Enterprise Scheme. With a record of empowering 500 self-help groups, the state has extended further support to 1,000 self-help groups with an allocation of rupees 10 crore under the Arun Shri Rina Yojana. Each of these groups now holds a fixed deposit of minimum 1 lakh rupees. Geology and mining is another sector which is helping in improving self-sufficiency. The state's mining royalties are increasing, and my government has notified the Arunachal Pradesh Minerals Regulation and Dealers Rule 2023. The state is collaborating with Central Mine Plant Design Institute to explore more coal blocks that will generate employment and revenues for the state in the near future. Arunachal is bestowed with unparalleled natural beauty, making tourism one of our core competencies. We have 14 tourist circuits now, and we have seen 64% increase in tourist footfalls in last 8 years. I am happy to note
I am happy to note that my government is taking initiatives to support tourism entrepreneurs through various initiatives. Till date, 741 individuals have been provided value-added subsidies under Chief Minister's Paryatan Vikas Yojana, and 226 youths were trained in adventure sports under the Chief Minister's Skilled Advanced Certificate. Honorable members, in its commitment to maintain law and order, my government has significantly strengthened the policing and judicial infrastructure. Over the last few years, my government has inducted 15,285 personnel and the addition of 418 new vehicles, expanded police networks with 68 new police stations, 21 Mahila police stations, with 7 being operational. Zero and SEPA now have ISO certified women police stations. We have embraced technology to enhance public safety through adoption of CCTV surveillance and migrated to the CCTNS server and citizen portal, that is Crime and Criminal Tracking Network and Systems. Established 32 new courts, a substantial increase from the meager 2 in 2010, and began repurposing its first ever central jail into a correctional home with a capacity to accommodate 1,000 inmates. Let me now applaud the state's effort in social assistance programs where benefits have been provided to the vulnerable sections of the society who may otherwise be infirm in making ends meet. Along with providing significant top-ups, the social assistance programs covers the following: 48,722 old age beneficiaries, 7,168 widow beneficiaries, and 3,435 Divyang beneficiaries in all. Infrastructure development through synergy and convergence. Honorable Speaker and honorable members of the Assembly, our guiding pillar, infrastructure development through synergy and convergence, is aligned with 2 guiding pillars of the Saptarishi: reaching the last mile and infrastructure and investment. It always gives me immense satisfaction in sharing with you the unprecedented progress achieved by the state, making substantial investments towards enhancing connectivity, fostering cultural exchange, boosting tourism, and facilitating trade. In a historic development seen only after 75 years of independence, the state now has its first full-fledged Doini Polo Airport at Holongi, Itanagar. This has recently attained all-weather licenses. Arunachal now boasts of 4 airports at Holongi, Pasighat, Teju, and Zero, all developed within the last 8 years. Over the past 8 years, Arunachal Pradesh has witnessed a remarkable surge in road infrastructure. In this time frame, despite challenges of terrain and weather, Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu and his team have constructed an extensive 19,863 kilometer road network and successfully developed 2,482 kilometers of national highways. As a result of focused investment in the road sector, in the last 8 years there has been 91% increase in the length of highways from mere 1,042 kilometers in 1516 to 1,992 kilometers in 2022-23, and 64% increase in the overall road length. The road density has increased from 36.65 kilometers per square kilometer to 65.99 kilometers per square kilometer since 1516, and 195 bridges have been built to connect the previously unconnected areas. We can look ahead to an additional 2,857 kilometers of national highways which are slated for construction with a union government allocation of nearly 44,000 crore rupees.
105 roads covering 1022 kilometers and connecting 125 habitations with an estimated cost of 2,205 crores have been sanctioned under the Vibrant Village program for this year. In the other connectivity initiatives, 2,401 villages have been provided with 4G towers and 3.02 lakh rural households electrified through Saubhagya and Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana. Honorable members, in our attempt to ensure water security and water supply to all our citizens, the state has exceeded our target by developing 2,044 Amrit Sarovars sites and achieved 98.29% of coverage of functional household tap connections under the Jal Jeevan Mission, providing 2,30,275 households with tap water and ensuring that 4,113 villages have attained the status of Har Ghar Jal villages. Honorable members, I am pleased to inform you that my government's effort in harnessing sustainable energy sources have also borne fruit. In the past few years, power sector infrastructure has been augmented significantly with the following: operationalizing 72 hydel stations in Western Zone and 88 hydel stations in the Eastern Zone, commissioning Roing Chapakhova 132 kV double circuit transmission line having linkage with northeastern grid to overcome frequent power disruptions, pioneering use of latest 33 kV gas insulated switchgear technology with their installations at Daporijo, Alo and Dukhampani, installing a 100 kilowatt off-grid solar power plant at Anini, and installing 199 solar water pumps under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahabhiyan PM Kusum. Towards reformation of the power sector, my government has adopted the Arunachal Pradesh Energy Conservation Building Code 2022, that is APEC BC 2022, implemented online billing and payment systems with more than 1 lakh consumers on board onto the platform, and taken up the key infrastructure project estimated at rupees 1,092 crores for distribution infrastructure development along the extension of electricity network to border areas. It gives me great pleasure to recount the outcomes achieved by Shri Pema Khanduji and his team Arunachal in the determination to bring electricity to every household in the state during last 8 years. A total of 5,258 villages have been electrified since 1516, indicating a coverage increase of 25%. The state's power generation capacity has increased from 405 megawatts to 1,259 megawatts. A total of 2,466 smart street lights have been installed in the towns of Itanagar, Tawang, Sepa, Namsai and Changlang. And 6,093 solar street lights have illuminated 712 villages across 13 border districts, enhancing safety and security for our villagers during the night hours, particularly for women and girls. Honorable members, the state's waste management infrastructure has also seen significant improvements over the years. Some of the worthwhile initiatives have been: the state's first sewage treatment plant, STP, with a capacity of 200 kiloliters per day, was set up for rejuvenation of Yangmasu River in a record time of 5 months. The Itanagar Capital Complex wastes about 44,117 cubic meters of it are being 100% extracted and processed at Karsinga and Chimpu sites. The state's first fecal sludge treatment plant is ready at Chimpu. Material recovery facilities with cumulative capacity of 9 tons per day are operational at Namsai, Zero and Basar.
and a policy for comprehensive development of the MRF stores increase of waste processing capacity to 47 tons per day has been adopted. Honorable members, development initiatives to assist our armed forces in guarding and protecting our borders with ready cooperation of our civil populace living in the harshest of terrains, another focus area of my government. The Vibrant Village program is a shining example of synergy and convergence to create infrastructure in the remotest areas of the state with the motto connectivity to activity to vibrancy in our border areas. 1,452 villages have been synthetically mapped. 455 priority villages have been identified for development, and 252 border habitations have been connected through construction of 2,506 kilometers of roads to improve ease of living of remote rural communities. As a result of these interventions, we have started witnessing the welcome reverse migration in many border area locations. I am confident that sustained focus of the government on the Vibrant Village program will further promote activity and vibrancy in these areas. Honorable members, with these synergetic developments approach of my government towards infrastructure and connectivity, I am sanguine that Arunachal will reach a stage in the next 10 years where 100% of habitations are connected with road, piped water, power, telecom services, 100% waste is processed, and all are done through 100% renewable energy. This is the vision of Honorable Chief Minister and his cabinet for a Viksit Arunachal Pradesh, contributing to Viksit Bharat. A word on environmental protection and climate resilience. Honorable Speaker and honorable members, with over 80% forest cover, a diverse flora and fauna, and major Himalayan streams, lakes and rivers, Arunachal is amongst the most ecologically gifted states. Here too, under the progressive and future-oriented leadership of the Honorable Chief Minister, Shri Pema Khanduji and his team, has seen this government continually strive to protect our ecology and environment, identifying and overcoming vulnerabilities. Environment protection and climate resilience is the sixth key strategic pillar of our vision for 2047, which is aligned with the green growth guiding pillars of the Saptarishi, which is being taken forward with Sabka Prayas, with the government proactively mobilizing citizens towards sustainability through several initiatives. And these are: in a noteworthy development, the Council of Ministers adopted the landmark Pake Tiger Reserve 2047 Ministerial Declaration on Climate Change Resilient and Responsive Arunachal Pradesh to accelerate comprehensive, smart, climate resilient and inclusive development. The first such sub-national ministerial level climate declaration in India and possibly globally, the Pake Declaration with its 5 broad Panchadhara domains and underlying 75 climate resilient strategies are being implemented through climate tag budgeting approach. I am glad to note that my government has so far financed 89 climate actions categorized into climate change adaptation, rupees 526 crores climate change mitigation, rupees 64 crores in hybrid actions, rupees 137 crores respectively. The Arunachal Mission Life campaign saw massive participation of over 55,961 pro-planet people. During the campaign, 52,114 lifestyle for environment pledges were taken by 3.76% of the state population as against the national average of just 1.2%, showcasing an innate desire on the part of the citizen to go green. Environment management plans have been notified for all of the 25 districts in the state. In other noteworthy initiatives, the state has undertaken 2,822 hectares forestry plantation under the Green India Mission and eco-restored nearly 2,189 hectares of degraded
open forest, rehabilitate shifting cultivation in 1,277 hectares and restored more than 12 hectares of wetlands, initiated nature-based entrepreneurship such as the Bamboo Incubation Center, the ecotourism projects at Zero, Pasighat, Namdapa National Park, Kamlang Wildlife Sanctuary, Yarping, Alo, and Balemu. Expanded forest cover through compensatory afforestation in 26,440 hectares area and created special tiger protection force to help in better protecting the tiger reserves of Pake, Namdapa, and Kamlang. Honorable members, Arunachal has 40% of India's hydropower potential, which can spearhead the nation's aim for green energy and also generate huge revenues for the state. In the last 8 years, my government has successfully achieved the following. Commissioned the microhydel station at Pinchi with a total capacity of 500 kV. Commissioned 600 megawatt Kameng hydropower project, which the Honorable Prime Minister inaugurated and dedicated to the nation. Commissioned a total of 17 projects till date under the Golden Jubilee Border Village Illumination Program and signed agreements with 3 central PSUs for kick-starting 13 stalled mega hydro projects worth 12,523 megawatt capacity. These projects entail a cumulative investment of close to 1.4 lakh crores and will generate an annual revenue of around 10,000 crores when completed. Overall, the state government has invested a total of 1,013.8 crores in the hydropower sector in the last 7 years with the following singular impacts. 213% increase in our installed hydropower capacity from 405 megawatt in 15-16 to 1,270 megawatt in 22-23. Making Arunachal the second power surplus state in the northeast, and the construction of Subansiri Lower Hydroelectrical Project with a capacity of 2,000 megawatts is nearing completion, making it the largest hydropower dam in the country at present, which will only be surpassed by the 2,880 megawatt Dibang multipurpose projects when it is completed. To conclude, Honorable Speaker and Honorable Members, I would like to say that with great personal satisfaction that the 6 development pillars of priorities of my government have laid a strong foundation in progressing towards a happy society which is constructively engaged in sustainable development of our beloved state. The government, very ably and proficiently led by Honorable Chief Minister Shri Pema Khanduji, has left no stone unturned to make our vision of a happy, cohesive and inclusive society. In this, we are extremely grateful to the generous support provided by the Government of India and the blessings of Honorable Prime Minister for all our efforts and priorities. We have all been witness to the record pace set in all sectors, whether it is providing ghar, bijli, pani, swachhata, sadak, rail, air and port connectivity to people. Wherever you see the extreme dedication to the nation and the state through kartavya and seva bhav of my government is reflected. From third largest startup ecosystems to improved road safety, port and rail traffic, highways, decline in death rates, improved sex ratios, substantial reduction in teacher-pupil ratios, our Vikas Yatra has gone from strength to strength. Lastly, fulfilling the aspirations of the youth, livelihood generation through self-employment opportunities, while continuing with our investments in infrastructure for improved connectivity, has been and will be the vision of my government for a prosperous and happy Arunachal Pradesh in the Amrit Kal and becoming a developed state of a developed nation. Thank you very much. Jai Arunachal, Jai Hind, Jai Bharat.
Honorable members, I'm deeply grateful to Honorable Governor for addressing the 13th legislative or 13th session of 13th and the last session of the 7th Legislative Assembly. Now I would like to request Honorable Governor and Honorable members to proceed for a group photograph followed by high tea at the banquet hall. And I adjourn the House till 11:30. Thank you. May I rise for the national anthem.
हेलो 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 एक जन फोन मिलाई तो हेलो 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 वो मुझे नहीं मिला हेलो हाँ जी हेलो 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 ओके हाँ ठीक अरे अभी इसको बोला था रख दो बोल के वो नहीं रखा है क्या ओ वो है ना वो अभी साइन लेके तभी भेजेगा ना उसको दूसरा पूरा बीच में है तो ना ये रनिया टेप उसमें है ना हाँ ये बीच में रुको रुको मिनिस्टर नाकाम नालो और तागे ताकी का और किसका नहीं है दोनों है क्या नकल ना लोग ताकि ताकि कब वो उधर में जब प्रजन होगा ना देगा वो लोग अपना से वो लोग का सिग्नेचर साड़ी लेते हैं क्या तो हम लोग यहाँ से निकल जाएगा क्या यहाँ से निकल के ये लोग रूम जाके दिखेगा बोलने से यहाँ बोला है ना बेचारा यहाँ से उसके डायरेक्ट अपना रूम निकल के दिखेगा चलो जाके हम यहाँ से
कंफ्यूज होगा वो, इसलिए वो पुराना को क्लियर करने के बाद में फिर हम बोलेगा वो दूसरा नंबर भेजो बोल के। हेलो, हाँ, उसका बाद हम नया नंबर मंगाएगा, नहीं तो वो पजलिंग होगा फिर। हम बोला है कि तुमको तो कॉल किया था बोलता है, तो बोला नहीं कोई कॉल नहीं किया बोला है। ठीक है, वो क्लियर करके हमको मैसेज मार दीजिए तो हम मंगा लेंगे। नहीं तो वो ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठटवांग लोग क्या जैसे भी लगा रहा है वो हमको व्हाट्सएप भेज रहा था, वो क्या है? ठटवांग तो आप भी एंगेज कर रहे हैं ना? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ठीक है। हाँ, अभी हम रख रहे हैं, बाद में मैसेज करो काम हो जाने का बाद में। आपका लो तो नहीं दिया हमको नहीं बोलेगा, उन लोग बोलेगा क्यों हम बोलेगा? सीएम को जाके फिर बोलता है ना, हम कंसल्ट नहीं करता। पहले भी ऐसा रिटर्न दिया है। बोलना भी है तो उन लोग को प्रोसेस भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन हम तो बोलेगा सर
Honorable members, Honorable Speaker. Namaskar. Good morning. Now I request Secretary to lay the Governor's address. Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table of the House a copy of the Governor's address. Thank you. Now we will take up the obituary reference in reference of late Yumsem Mate, former MLA. Late Yumsem Mate was born on 10/3/1969 to late Yumsen Mate, 53-year-old, a prominent leader who died in an unfortunate incident on 16/12/2023. He is survived by his wife, 2 sons, and 3 daughters. Late Mate was active in political and social development since his school days. He was the first graduate from the Olo community of Tirap district. He was elected as MLA from 56th Khonsa West Assembly constituency in the year 2009 from Indian National Congress and served as Parliamentary Secretary of Women and Social Welfare, Social Justice and Tribal Affairs and Tirap Changlang and Longding Department of Tirap Changlang and Longding Government of Arunachal Pradesh. With his demise, Arunachal Pradesh in particular has lost a visionary leader. Now, members who would like to make obituary reference may do so. Speaker, sir, it is a matter of great pain and sadness to participate in this obituary reference of late Sri Yumsan Mateji, who was member of this house from 2009 to 2014. At this youthful age, this unfortunate incident has occurred. He was brutally murdered at the Indo-Myanmar border on 16th December. It was a shocking news for everyone. This has proved that our international borders are not safe. It is not properly being guarded. And the anti-social elements and different insurgent groups are having a free pass in the areas of international borders, which is very dangerous for every citizen. This is not the first time Tirap district has been facing
since 2001, there have been several incidents of killing and kidnapping, including ex-MP, late Wangcha Rajkumar, and many more distinguished citizens of Tirap districts have lost their lives. Many women have been widowed. Many children have been orphaned. I think on this, taking this opportunity, I would like to request the central government through state government to make the international border, wherever it is very sensitive, a foolproof security for protection of the citizens as a whole. The common people are always under fear of intimidation, which is impacting the very existence of normal life in the Tirap district. I would not say only Tirap district, the entire TCL belt. In the long past, the subsequent incidents prior to 2016, there have been several incidents. I think I am thankful to this government, especially to Honorable Chief Minister Pema Khandu, that he has been very sensitive and sympathetic to the families of the victims of such incidents. When ex-MLA late Tirong Abo with 11 of his entourage group members were ambushed and killed, then also government has given ex gratia and jobs to some of the eligible family members of the victims. For this, I would like to thank Honorable Chief Minister especially. And this time also, I would request that some kind of sympathetic consideration or action or help, sympathetic help, if some kind of sympathetic help can be extended to the bereaved family of late Yunsen Maite, either to give some kind of job to his wife or any of the eligible children, so that the family can sustain themselves, is my special request. Apart from that, I would also suggest to the law enforcing authorities, especially the security forces, to be more vigilant
though they are already doing their duty, do their best, and sensitive to the causes of the people in the district, so that such incident does not reoccur. It was very sad that the leader, a prominent leader, a promising leader who was intending to contest the coming election and serve the people, was victimized, was murdered without assigning any cause. He was, before joining politics, he used to work as adult education officer in education department, and he was very active socially, down to earth with everyone, especially with the people of his constituency. And with his death, many people, especially in his constituency, many of his well-wishers, many of his supporters have been deprived and aggrieved by this ugly incident. Speaker, sir, therefore, with some of this, my observations, I convey my condolences through you to the bereaved family. Thank you. Sri Lasam Simai. Honorable Speaker, sir, I rise here to participate in the obituary reference of a late member of the Circus House, Yumten Mateji. Sir, 16 December 2023 was a dark day for the entire state and particularly for the TCL region. The tragic death and unfortunate incident has brought a wave of shock to the entire state. Late Yumsen Mateji was a very friendly man, a person with kind-hearted, very down-to-earth, very promising and people's leader. His death is not only a loss to the Olo community or the TCL region, but also to the entire state. I was associated with him when I first elected as a member of this August House in 2014. I was allotted the MLA cottage where he was there. He stayed. MLA cottage number 3. One fine day I went and met him, and I said, "Sir, I have been allotted your cottage." And he said, "Bhai, thora samay dijiye mujhe vacate karne ke liye." Then that way we become a good friend, and I regarded him as an elder brother. When the news came of his tragic death, I could not believe a person like him
will be put to death in this manner. Because he was a very kind-hearted man, very loving personality. However, the truth, this is the truth. And I'm very, fortunate to visit and give my last homage to him, along with our Honorable Deputy Speaker and also our Honorable MLA Khonsa East, Savin Saab. We three of us went to his place and pay our last homage. So, through you, sir, I would like to extend my condolences to the bereaved family on my behalf and on behalf of the people of my constituency. Thank you, sir. Gabriel also. Thank you, Speaker, sir, for giving me this opportunity to participate in the obituary reference in respect of late Jumsen Mate. A senior colleague, a gentleman, a perfect gentleman, in fact he was. His murder was most gruesome, brutal, and above all, it was a fault, and people inimical to the society had hit him below the belt. We were deeply hurt. In fact, who was Jumsen Mate? The most important thing is that Jumsen Mate was an inspiration of his community. Jumsen Mate was the hopes of his community. He was one of the most prominent and promising leader of his community. And this community, as you have, Honorable Speaker has mentioned, the Olo. The Olos are one of the most backward community in Arunachal Pradesh. And in fact, the security controls in those areas drastically changes, primarily because these communities, they all inhabit along the border with Myanmar. And hence, therefore, I believe that it's important for this August House that the best tribute that we can offer to let Jumsen Mate ji is to try to identify the fears and concerns of the community that he represented. And therefore, I believe that the best tribute that we can offer to let Jumsen Mate is to ensure and secure that the whatever developments that has been brought forth for the community, especially in those areas, must be implemented in letter and spirit. And therefore, the government may like to, in fact, appoint a guardian minister so that the fears and concerns and the needs and expectations of the people living in those areas are properly taken care of. I had personally known Mr. Jumsen Mate for decades, even while he was serving as the adult education officer, and much before that also, that he had always been speaking about his communities, the sufferings, the challenges, and the limitations of the communities that he belonged to. And therefore, as we all can understand, when he was intending to contest again in the next elections as well, it definitely points to the aspirations, to the hopes, and then the expectations of the Olo community. And hence, I would once again reiterate that the reason why he was still intending to contest was primarily because of this underlying undercurrents in those areas. And it's very important that when we have been talking about Sabka Saath, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas, it's very important that we carry along these communities and ensure that we change the security controls in those areas through various measures by the government, as well as ensure that the backwardness tech that has been so closely associated with the Olo communities are properly taken care of. And that's how I believe
would it be the best tribute that we could offer to late Jumsen Mateji. With these few words, I conclude while offering my condolences to the brave family members. Thank you, Deputy Speaker. Thank you. Now, W7. Deputy Speaker, sir, thank you for giving this chance. But it is said that I raised up here to participate in arbitrary reference of late Jumsen Mateji. Yes, we have been informed by Honorable Speaker of his biodatas and his careers. To me, he was my friend while we were schooling. And in 1987, he was my assistant in a school as a general secretary. Then we joined the education department. I as a minor teacher and he as an district adult education officer. Then serving for a little while, his people wanted him that he should lead the society, the constituency, and work for the public. So as he resigned and contest election in 2004, but unfortunately he lost it. But with the blessing of the people of the constituency, he came to this August House in 2009. And once again in 2014, he lost the election. His demise is not the loss only to the Olo community and the district, but the whole of Arunachal, as he was one of the members of this August House serving the people of the state. We can say nothing as the unfortunate incident took place on the fate day in December 16. He was brutally killed, but we don't know what was the cause. But then the fact that his life has been taken and his children that he left and the two wives are now without a father and without a husband. We can only pray God that the children, the other household families, his near and dear ones, are blessed by Almighty God. And whatever government can extend the family, that would be appreciated from the community and from the district and from all the well-wishers. It is a matter of fact that the TCL region are affected with all the things that all of us are aware of. The leaders of the TCL areas are always in thoughtful mind of how the area can come into peace and development takes place like elsewhere in other places. Despite the condition of that area, the leaders of that
area, the TCL area, are trying to maintain peace, development, and try to live unturned, to live together with all the societies, so that the people there, the villagers, are confident upon the government, where we are part, the leaders are part of it. Today, as a former speakers, those who took part has also already pointed out that the loss with the death of late Yumsen Mate is not the loss of the family, but all of us. And in this juncture, Deputy Speaker Sir, through you, I convey my heartiest condolences on my own behalf, on behalf of my people of my constituency, to the Bere family in this sad hour. I also at the same time request once again our government, especially Honorable Chief Minister, Deputy Chief Ministers, to extend any possible help if the children come to the government for any kind of help. That will be a real condolences for which the government and all of us can convey. Thank you very much. Next, Honorable Minister Onchun Naranji. Honorable Deputy Speaker, sir, I raise here to participate in the obituary reference in respect of late Yumsen Mateji. Sir, it is very sad and painful to be mentioned that why this kind of situation should compel us to participate in the obituary reference, which is because of unnatural death. There are two kinds of death. One is natural death and another is unnatural death. So Mataji has prayed to the unnatural death. He has been assassinated in the broad daylight, which is quite painful, sad, and sorrow for all walks of life of the people of this state, particularly the Olo community and the Vire family members and us all. It is very unfortunate that why this kind of incident take place in TCL area. And it is very important to observe that what kind of punitive action and what kind of step to be taken to prevent this kind of incident and the killing in the TCL area. We will have to think very seriously that whether it is because of personal reason, whether it is because of political reason, whether it is because of business, whether it is because of anything else, this kind of killing is quite unfortunate, and we criticize and we condemn it. Why human beings should be killed mercilessly? What is the reason? We all have to find out and engage the law enforcing department to find out who has done that. Any agency government has put into, that agency should very seriously and carefully find out the culprits, and the law should be allowed to give justice to the soul of the Mataji
and the bereaved family members. हम जानवर को भी नहीं मारना है, आजकल हमसे बोलते हैं, चिड़िया को भी नहीं मारना है, जानवर को भी नहीं मारना है. Not to talk of the human beings. Why human beings should be killed without reason? And we reason also why human beings should be killed. There is a question mark. Mataji was a cool person. Of course, he was not so talkative person. He was efficient, active, smart, and peace-loving person. He came to this assembly in 2009, and he has worked with us, with honorable ministers, honorable MLAs, with the government, with the party, and with the honorable speaker and honorable deputy speaker. At his own level, he has done a lot. People of his areas were expecting a lot. He represents the people's views, opinions, proposals, grievances to the government and the department. I have seen. When I was a minister in 2009, during the 2009 to 2014, he requested me to take initiative for upgradation of the CO headquarters into the EAC headquarters in Lazio. I have, of course, taken initiative, and the EAC, the CO headquarters to EAC was upgraded for Lazio Circle. It was his achievement. It was my achievement also. He was very happy. I helped him much. I helped him a lot. That I used to say that was upgraded for the achievement and the fulfillment of the Marty's desire for the people of Lazio Circle. मैंने वो सर्कल अपग्रेड करने में हम बहुत मदद किया था. गवर्नमेंट ने किया, लेकिन इनिशिएटिव मैंने काफ़ी लिया था, जैसे उसने हमको रिक्वेस्ट किया था. तो I know him well, and we used to guide him, and we used to help him for developmental activities, for the well-being of the people, for the future of the area and the district as a whole. अच्छा था, इस बार भी अच्छा हो रहा था. In his personal life also, he has done a lot of personal reformation. जैसे हम लोग ट्राइबल लोग तो कुछ खाता था, पीता था, जैसे लाइफ स्टाइल अलग था, लेकिन उसका पर्सनल भी उसने काफ़ी रिफॉर्मेशन भी लाया था. He was becoming a good person, better person means. तो अनफॉर्चुनेटली उसी दिन 16 दिसंबर 2023 हम लोग वंकी साहब का बेटा का शादी पार्टी में था. हमारा ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर भी था, हम लोग साथ में था. तो व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम देयर, तो रास्ता में सुनने को मिला कि माते जी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया. तो वी फाइंड आवर सेल्फ डिफिकल्ट टू बिलीव सो. तो क्यों ऐसे ब्रॉड डे लाइट में कैसे मारेगा. तो लेकिन डेट इंसिडेंट हैज अल्टीमेटली कम टू कि उसका जान ले लिया है, चला गया है. सर अभी मैं आपका थ्रू यही बोलना चाहूँगा, कोई भी एजेंसी लगाया है, दैट एजेंसी हैज़ टू बी वेरी सीरियस, एंड वी हैव टू टेल दैट एजेंसी दैट जो भी कल्प्रिट हो जस्टिस वीरे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए. नॉट ओनली वीरे फैमिली मेम्बर्स, माते जी का आत्मा भी शांति मिलेगा. जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड. ऐसे भी सुनने को आता है, मिलता है कि उसका माते जी का PSO था बोला है, एक था न दो था, उसको विड्रॉ किया है ऐसे सुना है. हाउ फाइट इज ट्रू आई डू नॉट नो. इवन मैं आपका थ्रू अपील करना चाहूँगा, कोई भी 30 रीजन में एक्स MLA हो, एक्स मिनिस्टर हो, प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट सिटिंग MLA मिनिस्टर, उनको जिसका इनसिक्योर फीलिंग है या कुछ थ्रेट है या कुछ परसेप्शन है, तो उनको PSO दिया जाता है गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्सिंग डिपार्टमेंट या पुलिस अगर विड्रॉ किया है तो विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, कम से कम PSO के साथ में होना चाहिए था. इफ दैट काइंड ऑफ इंडिकेशन वाज देयर, इनसिक्योर फीलिंग अगर है तो PSO विड्रॉ नहीं करना चाहिए था. लेकिन हाउ फाइट इज टू आई डू नॉट नो एग्जैक्टली.
ऐसे सुना है, पीएसओ भी नहीं था बोला, कम से कम पीएसओ होने से भी ठीक था। अभी भी एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर लोग को पीएसओ दिया गया है किसी किसी को, then that has to be continued। अन्य डिस्ट्रिक्ट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, चेंज होना है, प्रॉस्पेरिटी होना है, उन्नति होना है, लेकिन TCL जगह में डेवलपमेंटल या पब्लिक का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड, प्रॉब्लम है वहाँ में। everybody knows it। our honorable members all of them know that क्या सिचुएशन पे TCL में प्रिवेलिंग हो रहा है, कैसे चल रहा है, दिन हो या रात हो या हफ्ता हो या महीना हो या साल हो, वहाँ क्या चलता है, ये तो सबको मालूम है। So I would like to appeal this house through you that all should cooperate and all should try their best to know the situation and condition of TCL district। एंड ये PSO वगैरह हो या कोई सिक्योरिटी देने में और भी जोर लगाना है, मेरा तरफ से ये अपील है। जैसे हमारा फॉर्मर स्पीकर लोग जैसे बताया गया है, जो भी एनी काइंड ऑफ पॉसिबल हेल्प, एक्स ग्रेशिया हो या इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जॉब हो, ये कोई भी तरह का इंसेंटिव हो, रिलीफ हो, हम लोग वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होप दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग whatsoever is possible। तो गवर्नमेंट को भी ये मेरे फैमिली मेंबर्स को, वहाँ का लोग को, व्हेन ए लीडर हैज डाई, वहाँ का लोग का तो बहुत सफ़र होता है, ग्रीवेंसेस होता है, तो उनका जनता के लिए या मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी जो भी पॉसिबल है वो मदद करना चाहिए। एंड वी TCL लीडर्स ऑल्सो विल ट्राई आवर बेस्ट टू एक्सटेंड हेल्प वट एवर इज पॉसिबल। तो हमारा ये मेरे फैमिली के लिए हो या एरिया के लिए हो। सर ये शॉर्ट पार्टिसिपेशन में हम यही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का तरफ से जो भी चीज़ है देने की कोशिश करे, जल्दी दिया जाए, और जो भी एजेंसी लगाए हैं उसको अच्छा से फाइंड आउट करने के लिए लगाए, जस्टिस डिलीवर करने के लिए। एंड आई विथ ग्रेट सैडनेस आई वुड लाइक टू conveyed my condolence through you on my own behalf and on the behalf of the people of 60 Pongchawaka ST Assembly constituency and on behalf of the people of Longding district as a whole, convey my deepest and heartfelt condolence to you, to the Bire family members and the people of that area. Thank you so much, sir. Thank you. Next, Honorable MLA Tan Phong Noji। Honorable Deputy Speaker, sir, I rise to take part in the obituary reference in respect of late Yumsan Mate, former MLA from 56 Khonsa West Assembly constituency। In this pain and grief hours, I would like to share my pain with the bereaved family through this obituary reference. That by persons, I know Yumsan Mate is a good personality and have a friend with me, though he may be younger to me. As per sources from his constituencies and the community, he was a first graduate and joined in the government job as a district adult education officer. Then on demand of the people of his community, that is Alo community, he resigned from the service and he contested, but in one term he got lost. In 2009, he was elected and he sometimes visit to Longding district, especially to meet his son who was studying at VK Vinyausa. And he used to visit to my residence and sharing about the developmental activities of Tiraf district. At that time, Longding was also not vacated. He was in a good opinion. And
good-hearted personalities to think over the developments of the area. So what I feel is that in this younger stage, the leader of the state, the leaders of the communities, and the leaders of the assembly constituencies, whatever he or she may be, killing in this age by our brothers, Naga brothers, who is in the UG, is not appreciable. I also throw these obituary references. I would like to request them, taking off the life of the individual will not solve the problem of the areas and the problem of any individuals. I would like to share my opinion in the August House that in the TCL region, not only in the Kunsa, in the TCL region, due to the peculiar locations, topography, bounded with the international boundary with the Myanmar, with the Nagalands, with the Assams, we are facing a lot of hindrance in our living. So in the security point of view, the government have to be viewed and killing off the leaders to be delivered a justice so that the region should come to know to the people of the entire state of Arunachal Pradesh, especially in his various families. So through this obituary reference, through you, Speaker, sir, I convey my heartfelt condolences on my personal behalf and the behalf of the people of 59 Longding Pumau Assembly constituency to the Bradford family. Thank you so much. Next, Honorable MLA Chakat Abu. Speaker, sir, 16 December 2023 को former MLA जुमसन माटे का हत्या हुई थी तिरप में और 2029 से लेके वो 2014 तक वो MLA थी और हम लोग तिरप के लिए बहुत ही लॉस है। जुमसन माटे सर अच्छा लीडर था, तो मैं उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। धन्यवाद। Next, Honorable MLA Wangling Novanung ji. Deputy Speaker, sir, I rise on the occasion to participate in the arbitrary defense of late Yimson Matiji. I stand with my heads bowed to grieve the leader who's no more with us, who walked the presence of this August Assembly from 2009 to 2014. He belonged to one of the minor communities of the Nokte, the Olo. They say that the song is ended, but the melody lingers on. Yimson Mate may not be with us anymore, but then his works and his character and what he said will remain with us. It is a great loss for the people, especially of Tirap district, the TCL region, and also the state as a whole.
one more life has been snubbed away from us. Tirap is a very volatile place. People say the TCL region. Yes, I do appreciate the concerns of the people when we see the situation in our area, in the region. But Tirap district is even more volatile. The maximum number of incidences that has occurred among the 3 districts of the so-called TCL has happened in Tirap district. The government was awake. The police stations that have been constructed must be strengthened. They should not only be buildings for all the eyes to appreciate. There must be a practical approach to secure the land so that we may not lose any more lives in such a way. Are we awake? Have we thought about it? Because a loss is a loss. I visited the house of the grieving family on the 17th, immediately after we heard the incident, which happened on the 16th. He has left behind a grieving family, a grieving populace of his community, of his people, of the district. But then, there is also a saying, to live in hearts we leave behind is not to die. Thomas Campbell, a Scottish poet, had said, the memory of late Mate, Yumsen Mate, will be carried forward by his family, and we will be there to assist him. The government also should give proper care and love to the family who has gone in such a way, a very violent, unprecedented act, I must say. What can we say, Deputy Speaker, sir? The only thing that I can suggest to this House, to you, sir, is that late Mate may not be with us at the moment, but his memory should linger on. And for that, I commend and suggest that a memorial with inscriptions be erected in his memory, whether at Khunsa or Laju, an appropriate place where the people can remember such a good person, a kind-hearted man who lived this land. To you, Deputy Speaker, sir, I would like to convey on my behalf and on the behalf of the people of my constituency, 57 Bodria Bogapani Assembly constituency, my deepest condolences to the bereaved family members. May God give them strength to overcome this grievous situation. Thank you, sir. Any member to take part? Then I would like to give to the Honorable Minister Home, Sri Bamang Felix. Honorable Deputy Speaker, sir, I also stand here to participate in the arbitrary remembrance of late Yumsum Mate, former member of this Legislative Assembly, whose tragic and unfortunate demise
was a brutal act of violence that starkly contrasts with the values of peaceful and civilized society like ours. And sir, I had a privilege to work with him from 2009 to 2014 as a colleague legislature. We were together elected in this as a member of this August House. Yes, sir, he was absolutely a fine, cool gentleman, very friendly in the approach. I miss today the one of the best men that I have come across to work together. During this challenging time, my deepest sympathies are with the family of late Mateji, as well as his admirers and the entire community of Konsa West. We stand together in mourning and in the pursuit of justice. And sir, the incident, the unfortunate and tragic incident, I want to convey this August House through you, sir, took place on 16th December 2023. And on the next day itself, दूसरा दिन में ही हमारा पुलिस जब swung into action, the leader of the perpetrator were identified. वो पहचान गया था और including उनके जितने 6 accomplishment है, उनका भी identified हो चुका था on 17th of December. After identified, काफी चीज केस को आगे बढ़ चुका था, लेकिन आगे बढ़ने के बाद तिराप पुलिस को ये लगा कि this is an act of terrorist and it has been perpetuated from across the international border and from interstate border. तो इसलिए उसको कर नहीं पाएगा बोलकर तिराप पुलिस ने on 19th of December चिट्ठी लिखा PHQ को कि since the matter is highly volatile, more things to be investigated, therefore the matter may be recommended to NIA, National Investigation Agency. 19 को चिट्ठी आया PHQ में. PHQ immediately endorsed to Home Department, and Home Department on 21st December recommended to NIA for investigation. It was so fast that from the very first minute of that tragic incident, Honorable Chief Minister was closely monitoring and directed us to keep on informing him about the development. And accordingly, I, along with the PHQ, we have closely coordinated the entire things. जो आज मैं बताना चाहता हूँ कि the NIA team have already accepted our recommendation, and there are a team of NIA team is already in the PO, that is place of occurrence. Tirap में पहुँच गया है. Investigation has already started, and hopefully the government is determined to कोई भी हो जो भी हो. That was not only an attack on Yomsom Mate, that was not only an attack on the family of Yomsom Mate or the family of or the Nokte tribe or Tirap district, but it was an attack to the peace-loving society of Arunachal Pradesh, to the civilized society of Arunachal Pradesh. The government will not leave stone unturned to book the perpetrator. ये मैं आज अगस्त को बताना चाहता हूँ.
So NIA is already in the ground. And our police, Arunachal Pradesh police, is giving 100% support to the investigating team, जो अभी already टिरा में पहुंच चुका है. Having said that, I also join जो हमारे honorable members लोग ने जो emotion जो बताया, we understand it, and PHQ is taking review of the security measures of TCL region time to time, and as election is approaching, PHQ is more active in reviewing not only PHQ, other agencies, also intelligence agencies are being activated. And I would like to request Honorable Deputy Speaker, sir, to you, to our honorable members, as well as the people of TCL region, to cooperate with to the police and other agencies, not only to book these perpetrators, but this kind of unwanted tragic incident may not reoccur in that region or anywhere in Arunachal Pradesh. So with this, I also join in this arbitrary appearance my condolences. I pray Almighty God that may the departed soul rest in eternal peace and may give strength to the bereaved family. Thank you, Deputy Speaker. Next, Honorable Decision. अध्यक्ष जी, अभी जिन मेंबरों ने यमसम माते जी के बारे में, उनको किस हालत में मारा गया, उनका बारे में कहा और उनका घोर विरोध किया. जिस हालत में मारा अति घृणनीय है. किसी ने तो उसे कंडेम भी किया है. स्पेशली टीसीएल रीजन से सभी लोगों ने बोला. अति दुख की बात है. ये सभी मेंबर ने जो बोला है, मैं एंडोर्स करता हूं उसको. मैं भी कंडेम करता हूं. मैं भी एक ही शोर में यह बोलना चाहूँगा कि जिस हालत में उनको एलिमिनेट किया गया अति घृणनीय है. इनह्यूमन है ये. और अभी होम मिनिस्टर जी ने बता दिया कि अरुणाचल सरकार से जो कार्रवाई करना चाहिए वो कर रहा है. इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसे एनआईए को सौंप दिया गया है. एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्द ही वो परपेट्रेटर को पकड़ा जाएगा. ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है. और एक चीज़ आश्वासन दिया है कि टीसीएल रीजन के लिए जो सिक्योरिटी मामला है उसे अरुणाचल सरकार का जानकारी है और उसमें सिक्योरिटी शक करने के लिए जो भी कार्रवाई लेना होगा वो लेगा बोल के होम मिनिस्टर जी ने बोला भी है अभी. और उसके लिए जो भी अभी मेंबर जो जैसे हंसुन गन्नम जी ने बोला है कि उनका जो सिक्योरिटी थ्रेट को लेके जो समस्या है उस समस्या को अरुणाचल सरकार जाने, पुलिस विभाग जाने और उनका हिसाब से मदद भी करे. इसको भी मैं एंडोर्स करता हूँ. मैं 2095 में इस असेंबली में आया. मेरा आने का 15 साल बाद यानी कि 2009 में युमसम माते जी इस असेंबली में आया. मेरे से छोटा है उम्र में, यंग, वेरी एनर्जेटिक, अपकमिंग एक पॉलिटिकल सोशल लीडर था. उनका अपना समाज का. मैं उनको जानता नहीं था पहले, लेकिन जैसे जैसे उनका असेंबली में आना हुआ और एक साथ काम करने का मौका मिला, एक यंग, एक एनर्जेटिक,
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से मेरा बहुत करीबी आ गया वो. And I tell you, I tell entire member of this house, August House, that he was very close to me, very dear to me. मैंने उनका गांव भी गया, लाजू गया. बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में उनका गांव है, बैकवर्ड है, म्यांमार बॉर्डर का साथ जुड़ा हुआ है. विकास बहुत धीरे से किया है वहाँ में, देर से किया है. और उस समाज से, जो ओलो समाज से वो आते हैं, ज़्यादा शिक्षित भी लोग नहीं है. पहला जो ग्रेजुएट है बोलते हैं उनको, बहुत प्रतिभा थे उनमें, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हिस्ट्री में ऑनर्स लेके पास किया गया है, सरकारी नौकरी भी था. क्योंकि उसका समाज से जानकारी लोग नहीं है तो लोगों ने उनको शायद बुलाया उनको कि आओ समाज का सेवा करो. तो तब से तो समाज का सेवा करने लग गया. लेकिन इस तरह के लोगों को जिस हालत में उनको मारा गया है, ये इनह्यूमन है. ये मनुष्यों का काम नहीं होना चाहिए इसको. तो इसीलिए हम सभी ने मिलके इनको कंडेम करना चाहिए. इस तरह का हालत नहीं होना चाहिए. पहले भी हुआ है, वांकिल वांग साहब ने बोला है, सभी ने बोला है यहाँ टीसीएल रीजन का, कि पहले भी होके इस तरह का होके आया है, अभी वो हुआ है. अभी इसको खत्म होना है. इस तरह का इनह्यूमन एक्टिविटीज अरुणाचल प्रदेश में होना नहीं है. हम कितना विकास कर चुके हैं आज हम, हाँ, वी आर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ आवर जर्नी. हमारा जो टर्म है कंप्लीट हो रहा है, लास्ट असेंबली है. आज चर्चा हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर जी का साहब का जो अपना जो एड्रेस था, उसमें अरुणाचल प्रदेश का पिछले 7 साल में 2016 को लेके अभी तक 7 years में क्या विकास हुआ, किस तरह का विकास हुआ, पेमा खांडू सरकार ने किस तरह का एक रोड मैप बनाया, विकास का रोड मैप बनाया, उनका बारे में बोला है. उसका बारे में थोड़ी देर में चर्चा होने वाले हैं. तो इस तरह का विकास, जो विकास आया है, विकास क्यों आता है? जब शांति होता है तभी विकास आएगा. अशांति परिस्थिति में विकास नहीं आ सकता है. तो इसीलिए शांति कायम होना है. हम किसी भी तरह में, हम अरुणाचल सरकार शांति कायम रखेगा. हम चाहता है कि टीसीएल रीजन में भी टूरिज्म जाओ, टीसीएल रीजन भी विकास हो, उसका भी उन्नति हो, उसमें भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आए. अभी तो कितना, पहले तो जो भी ट्रांसफर होता है, ये क्या पोस्टिंग बोलता है उनको, पनिशमेंट पोस्टिंग बोलता है. तो अभी तो कहीं पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं है अरुणाचल प्रदेश. कहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग है? इस तरह का कहा जाता रहा. आजकल तो तिराप में लेके आप तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, तीनों डिस्ट्रिक्ट को लेकर, तीनों डिस्ट्रिक्ट वेल कनेक्टेड है. तीनों डिस्ट्रिक्ट से अभी कई कोना अरुणाचल प्रदेश में जा सकते हैं आप बिना असम में आए हुए. आप लोंगडिंग को कानूबारी बोलो, आपका जो गब्रियल वांसु जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी, असम से होके नहीं आना है ना. वो नामसाई, वो खोंसा होके, चांगलांग होके, मानमो होके, जयरामपुर होके नमसाई आ सकते हैं, आराम से नमसाई आ सकता है. अभी कुछ अधिवेशन होगा नमसाई में, वो असम होके नहीं आना है, पूरा टीसीएल रीजन का जो लोग हैं. इस तरह का डेवलपमेंट हुआ है. इक्विवेलेंट जुडिशियस डेवलपमेंट हम चाहते हैं. और ये बेनिफिट तिराप में भी जाना है, तिराप वालों को लेना भी है, तिराप टीसीएल वालों को लेना भी है. हम देंगे भी अरुणाचल सरकार. यह अरुणाचल सरकार का निर्णय है, पेमा खांडू सरकार का निर्णय है. तो इस हालत में अगर ऐसा इंसिडेंट होगा, बस शर्मदायक है. इट्स वेरी शेमफुल एंड दुख का बात है. उनका फैमिली को तो दुख हुआ ही हुआ है. सारे अरुणाचल वासी शॉक हो गया है. मैं तो जिस दिन उनको बारे में सुना ये बात,
वांकी लुआंग जी का बेटे के शादी था, मैं वहाँ था, बहुत सारे हमारा दोस्त एमएलए मिनिस्टर लोग था, उसमें से एक साथ था। तो जैसे दिन दोपहर का खाना खा के मैं निकल गया तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया कि माते इज़ नो मोर, ही इज़ बीन एलिमिनेटेड। शॉक हो गया मैंने, बहुत दुख लगा मुझे कि एक यंग अरुणाचल में उनके काम करने, अपना समाज के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, पूरा सर्वांगीण विकास के लिए उनका कंट्रीब्यूशन होता था। हम चाहते थे उनको, उनसे बहुत कंट्रीब्यूशन आए, लेकिन उनको ले गया, उनको मार गिराया उनको। और इस तरह का जो 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 हत्या किया है, और हत्यारियों को मैं कंडेम करता हूँ। ये अच्छा बात नहीं है। इससे अरुणाचल का विकास नहीं होगा, इससे TCL का विकास नहीं होगा। उनको जानकारी होना है। उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अरुणाचल में शांति लाने के लिए आप लोग, हाँ, कि जो अभी एक मूवमेंट आया है, विकास का एक मूवमेंट आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक आया है, मूवमेंट आया है, रिफॉर्म का एक मूवमेंट आया है, उसमें साथ दे, उसको डिस्टर्ब ना करे। हम तो यही मैसेज देंगे। तो इसीलिए तो मैं तो आज का दिन एक तो मैं फिर दोबारा मैं कंडेम करता हूँ, और यही चाहूँगा कि उनका आत्मा को शांति मिले। उनका परिवार को आपका जरिए से मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि उस दुख का घड़ी में अरुणाचल सरकार उनका साथ है, अरुणाचल वासी उनका साथ है, और हम अरुणाचल सरकार का तरफ से यही कोशिश करेंगे कि इस तरह का हादसा और कभी ना हो। तो मैं यही कहकर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members will stand for 2-minute silence to pray for his internal peace life, peace soul. Now we'll start now. Done.
very sadly, from the capacity of this chair, I, on behalf of the 60th Assembly constituency and the people of Arunachal Pradesh, and my own capacity, conveyed the condolence message to the bereft family, led ex-MLA Sri Jumsan Mate, and from the August House, we strongly condemn such brutal act, and we request not to repeat such brutal act in future too. And lastly, I pray Almighty God to bless the bereft family and to give more strength to overcome the wee hour, the odd days, and to wish the bereft family for their brighter future, the long life, good health, and successful life in days to come. Thank you. Now, honorable members, message from Governor regarding reconsideration of bill. I would like to inform the honorable members of August House that the coming Professional and Technical University Arunachal Pradesh Bill 2017 has been returned by the Honorable Governor of the following, on the following ground quoted. The coming Professional and Technical University Arunachal Pradesh Bill 2017 was sent for assent of the Governor, Honorable Governor on 5th February 2018, which is pending. On 11th October 2021, former Honorable Governor visited the university site with Chairman, Arunachal Pradesh Private Educational Institution, Regulatory Commission and Commissioner Education to see the progress made by the university during the past 4 years in creating the requisite basic infrastructure to be able to commence their academic session. The finding of the visit annexure, which have been conveyed to the Honorable Chief Minister, are as follows. A. The university is located 11 kilometers away from the small town of Trigino, the headquarters of the Additional Deputy Commissioner. The district headquarters at Bomdila is another 110 kilometers from the university location. It took us 45 minutes from Trigino over a badly damaged and meandering road to cover the 11-kilometer distance to the university location. B. In terms of infrastructure, there were only 2 concrete structures at the location. One is a 10-room block without any classroom, fixture and electrification fitments, and another is a 6-room toilet block. C. The university location is about 150 meters away from the existing road. The co-curricular activities enshrined in the coming Professional and Technical University Arunachal Pradesh Bill 2017 are football, volleyball, hockey, basketball, horse riding, discus, cricket, swimming, shot put, and lawn tennis, etc. Due to the terrain constraint and the undulation of the ground, it will need a moment effort for carving out any of the above mentioned playfield worth its name. D. The proposed university location does not have any town or shop to cater for the procurement of daily needs items. There are no residential rooms nearby the renting by the student or the faculty members. E. There are no feeder academic institution or college even in the far distance proximity of the location wherefrom the student can come to take admission in the university. F. The approach route to this university does not have any transport system which a student or the faculty can use to reach the location. G. The proposed university being in a far-flung, remote, townless, subless location without any educational facility
for the growing children is extremely unlikely to attach any talented faculty members and meritorious students. Consequently, the prospect of growth of this university into a standard education destination seems remote. As going to the black infrastructure progress made in last 4 years, there is no reliable indication that sponsors are likely to deploy the requisite resources for developing the promised amenities for the student. This gives an impression that the sponsors of the university are not only to having the formalities completely. For promotion of education in such rural areas, primary, middle, and secondary school must be developed first in sufficient numbers. In absence of such school, opening of a university in remote rural areas serves no purpose. If at all, such university is to be established in such remote area, it must be self-sufficient to fulfill the needs of students, faculty, and staff. To achieve this, huge resources are required to be deployed in view of which this proposed university, with its limitation as mentioned above, lost its very merit for existence. Further, on 10th January 2023, by this office letter, the Commissioner of Education, Government of Arunachal Pradesh, was requested to furnish the information about the progress made by the university. In response to this office, letter dated 10th January 2023, the state government constituted an inspecting team comprising of director and joint director, higher and technical education, to proceed to Trajano on 18th January 2023 to ascertain the progress of infrastructure development of proposed coming professional and technical university. The team opinion that the proposed university authority has not made infrastructure development since last visit of the Honorable Governor at the site. In view of above, the bill is returned for reconsideration under Article 200 of the Constitution of India, unquote. Item number 4, assent to bill. Secretary to report assent to bill. Honorable members, I rise to report the following bills assented to by the Honorable Governor. 1. The Arunachal Pradesh Airport Area Planning and Development Authority Bill 2023. Number 2. The Arunachal Pradesh Court Fees Bills 2023. Number 3. The Arunachal Pradesh GST within bracket Amendment Bill 2023. Number 4. The Pectorage Arunachal Pradesh Amendment Bill 2020. Thank you. Now, announcements regarding leave of absence of members. Honorable members, I have received requests from Sri Purpa Siring and Sri Ninong Iring for leave of absence. I have allowed their requests. Item number 5, panel of chairmen. Under sub-rule 1 of the Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I have nominated the following members to the panel of chairmen for the current session. Sri Guruk Pordung, Honorable MLA, Sri Muchu Methi, Honorable MLA, Srimoti Dangsalupul, Honorable MLA, Sri Ninong Ering, Honorable MLA. Item number 6, presentation of BSc report. Now, presentation of BSc report, Sri Bamang Felix, Minister of Parliamentary Affairs, may present the report. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move the following motion that this House agrees with the 11th report of the Business Advisory Committee. I will now put the motion to vote of the House. Those in favor may say ayes. Ayes.
Those against may say noes. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Item number 8, presentation of CAG report or GAC report. Sri Wangling Lowangdong, Chairman Committee on Government Assurance, may present the 8th report of the committee. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to present the 8th report of the Committee on Government Assurances. Item number 9, presentation of COPU report. Sir Ojing Tasing, Chairman Committee on Public Undertaking, may present the 5th report of the committee. Mr. Speaker, sir, I rise to present the 5th report of the Committee on Public Undertakings. Thank you. Now, item number 10, presentation of PAC action taken report. Sri Chow Jingnui Namchum, Chairman Committee on Public Accounts, may present the 80th action taken report of the committee. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to present the 80th action taken reports of the Committee on Public Accounts. Thank you. Thank you. Bill for introduction. Item number 11, Part 1, the Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2024. Now, bill for introduction, Sri Chaunamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotic, may move the motion for the leave of the House to introduce the Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management within bracket Amendment Bill 2024. Now the question is, leave be granted. Those who are in favor of leave be granted may say ayes. Ayes. Those against may say noes. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. Honorable Deputy Chief Minister and Minister in charge of Tax and Excise and Narcotic may now introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management within bracket Amendment Bill 2024. The Arunachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2024 is introduced. Now, item number sub 2, part, the Arunachal Pradesh Land Settlement and Record Amendment Bill 2024. Sri Nakapnalo, Minister of Land Management, may move the motion for the leave of the House to introduce the Arunachal Pradesh Land Settlement and Records Amendment Bill 2024. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Land Settlement and Records Amendment Bill 2024. Now the question is, leave be granted. Those who are in favor of the leave be granted may say ayes. Ayes. Those against may say noes. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. Now, the Honorable Minister of Land Management may now introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh Land Settlement and Records Amendment Bill 2024. The Arunachal Pradesh Land Settlement and Records Amendment Bill 2024 is introduced. Now, item number 11, subpart 3, the Arunachal Pradesh Lokayota Amendment Bill 2024. Sri Bamang Felix, Minister of Home, may move the motion for the leave of the House
to introduce the Arunachal Pradesh Lokayukta Amendment Bill 2024. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Lok Ayukta Amendment Bill 2024. Now, the question is to leave be granted. Those who are in favor to leave be granted may say ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The leave be granted. The Honourable Minister of Home may now introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh Lok Ayukta Amendment Bill 2024. Now, the Arunachal Pradesh Lokayukta Amendment Bill 2024 is introduced. Item number 11, subpart 4, the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024. Sri Pema Khandu, Chief Minister, may move the motion for the leave of the House to introduce the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024. Now, the question is, leave be granted. Those who are in favor of leave be granted may say ayes. Those against may say no. I think I say it, I say it, I say it. The leave is granted. The Honourable Chief Minister may now introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I introduce the bill. Now, the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024 is introduced. Item number 12, presentation of supplementary demand for grants. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may present the supplementary demand for grant for the year 2023-24. Item number 13, presentation of vote on account 2024-25. Sri Chonamen, Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may present vote on account for the year 2024-25, 4 months from the 1st April 2024 to 31st July 2024. Sir, mic on key. Sir, mic, please use mic. Yeah. Mr. Speaker, sir, I rise to present vote on accounts for the year 2024-25, 4 months from the 1st April 2024 to 31st July 2024. Item number 14, presentation on finance account. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may present the Finance Account Volume 1 and Finance Account Volume 2 for the year ending 31st March 2023. Mr. Speaker, sir, I rise to present the Finance Accounts Volume 1 and Volume 2 Finance Accounts Volume 2 for the year ended 31st March 2023. Thank you, sir. Now, item number 15, presentation of appropriation account. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may present the appropriation account for the year ending 31st March 2023. Mr. Speaker, sir, I rise to present the appropriation accounts for the year ended 31st March 2023. Sir, we'll go back to item number 13 with your apology. After your presentation on vote and account 2024-25, your speech is there. So now the Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may deliver your speech. Vote on account. Honorable Deputy Speaker, sir,
whatever speech on vote on accounts is to be made, I will make it on the governor's address after the on the discussion during the governor's address. That's all okay, sir. On one go. No? Thank you. We have already taken up 15, serial number 15, no, sir? Item number 15. No? Now, item number 16, supplementary demand for grant for the year 2022-23. Now, the House will take up decision and voting on supplementary demand for grant for the year 2023-24. The Chief Minister may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against demand number 1, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 25, 31, 33, 44, 47, 51, 63, 67, 70, 71, and 77. Next, the Deputy Chief Minister and Finance Minister in charge, Minister in charge, Finance, Planning and Investment, Power and Non-Conventional Energy Resources, Tax and Excise, State Lotteries, Economic and Statistics, may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 7, 13, 34, 36, 50, 54, 55, and 66. Thank you, sir. Now, the Minister, Public Health Engineering and Water Supply, Department of Tirap, Changlang and Longding, Information Technology, may please move demand numbers allotted to him. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59, 65, and 73. Thank you, sir. Now, the Minister, Rural Work, Science and Technology, may please move demand numbers allotted to him. Mr. Honorable Deputy Speaker, sir, on the recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 26 and 49. Thank you. Thank you, sir. Next, the Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government, State, Civil Supplies and Consumer Affairs, Geology and Mining, may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respected amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof
against demand number 22, 37, 57, 61, and 68. Thank you, sir. Now, the Minister, Health and Family Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Empowerment, and Tribal Affairs may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for on towards defraying the charges during the years ending 31st day of March 2024 in respect of the head of demand enters in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80, and 81. Thank you. Thank you, sir. Now, the Minister, Home and Interstate Boundary Affairs, Rural Development and Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 8, 27, 35, 42, 53, 58, 69, and 72. Thank you, sir. Now, the Minister, Industry and Skill Development, Textile and Handicraft, Trade and Commerce, Labor and Employment, Cooperation, may please move demand numbers allotted to him. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in this column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or for towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of heads of demands entered in the second column thereof against demand number 19, 29, 60, 64, and 79. Thank you, sir. Now, the Minister, Youth Affairs and Sports, Water Resources, Environment and Forests may please move his demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh. Sir, Mike. I beg to move that this sum not exceed the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the head of demands entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38, and 52. Now, the Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary, Dairy Development, Fisheries may please move demand numbers allotted to you. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of Government of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of head of the demand entered in the second column thereof against demand number 24, 28, 43, and 48.
Honorable members, I extend the time of the House till 1:30 p.m. Now, the Honorable Minister, Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs, may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the considerate fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. Thank you, sir. Now the Minister, Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that sums not exceeding the respective amounts shown in third column of order papers be granted to Minister in charge out of consolidated fund of State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2024 in respect of heads of demands enter in second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. Now all the supplementary demands for grant for the year 2023-24 have been moved and are before the House. Now the House will take up for voting on supplementary demand for grant for the year 2023-24. The question is that the supplementary demand for the year 2023-24 be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The supplementary demand for the year 2023-24 is passed. Item number 17, Subpart 1, Introduction of the Arunachal Pradesh Reappropriation. Introduction of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may seek to move the leave to introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024. Now the question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may now introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024 is introduced. Item number 17, Subclause 2, Consideration and passing of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024. Now the Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may seek to move for consideration of the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024 be taken into consideration. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2, 3 and the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it.
Clause 2, 3, and the schedule are adopted. Now question is that Clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I have it. Clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may move for passing of the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move that Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I have it. The motion is adopted. Being passed. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2024 is passed. Wrong feedback. Item number 18. Vote on account for the year 2024-25. Now the House will take up the discussion on the vote on account for the year 2024-25. Members who want to speak may please speak, and you all are requested to submit your names so that we can allot time accordingly. Honourable members, your turn to speak on vote on account. Sir said he will speak in what called Governor address. So, on one go. Pass kya ye? It's only for 4 months, so I think no need to discuss. Sal will express his, speech during Governor address. So on one go, he will cover up. I think now will Minister of Finance may reply. Sir, no need to reply. Now the House will take up voting on vote on account for the year 2024-25. The Chief Minister may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months, that is from 1st April 2024 to 31st July 2024, during the year ending 31st day of March 2025, in respect to the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 1, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 25, 31, 44, 47, 51, 63, 67, 70, 71, and 78. Thank you, sir. Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance, Planning and Investment, Power and Non-Conventional Energy Resources, Tax and Excise, State Lotteries, Economic and Statistics may please move demand number allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 7, 13, 34, 36, 50, 54, 55, 56, 66.
Now, the Minister Public Health Engineering and Water Supply, Department of Tirap Changlang Longding, Information and Technology, may please move demand numbers allotted to you, sir. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59, 65 and 73. Now, the Minister, Rural Work, Science and Technology may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of the demands entered in the second column thereof against demand number 26 and 49. Thank you. Thank you, sir. The Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government Estate, Civil Supply and Consumer Affairs, Geology and Mining, may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 22, 37, 57, 61 and 68. Thank you, sir. Now, the Minister, Health and Family Welfare, Social Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Improvement on Tribal Affairs, may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the years ending 31st day of March 2025 in respect of the head of the demand entered in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80 and 81. Thank you. Thank you, sir. The Minister, Home and Estate, Interstate Border Affairs, Rural Development and Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing, may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 8, 27, 35, 42, 53, 58, 69 and 72. Thank you, sir. Now, the Minister, Industry and Skill Development, Textile and Handicraft, Trade and Commerce, Labor and Employment Corporation may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge
out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of the March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 19, 20, 29, 60, 64 and 79. Thank you, sir. The Minister, Youth Affairs and Sports, Water Resources, Environment and Forest may please move demand numbers allotted to you, sir. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charge for months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38 and 52. Thank you, sir. The Minister, Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on recommendations of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts which are shown in third column of order papers be granted to Minister in charge out of consolidated fund of State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 25 in respect of heads of demands enter in the second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. Thank you, sir. The Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Veterinary, Dairy Development, Fisheries may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move the sum not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st May of March 2025 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against demand number 24, 28, 43 and 48. Now the Minister, Education, Culture Affairs, Department of Indigenous Affairs may please move demand numbers allotted to you. Mr. Deputy Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the orders papers be granted to the Minister in charge out of consolidated funds of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges for 4 months from 1st April 2024 to 31st July 2024 during the year ending 31st day of March 2025 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. Thank you, sir. Now all the vote on account for the year 2024-25 have been moved and are before the House. The House will take up for vote on account for the year 2024-25. The question is that the vote on account for the year 2024-25 be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The vote on account for the year 2024-25 is passed.
Since there is only 2 agenda left, so one agenda will keep for after lunch, and this one agenda will finish. Honorable Deputy Speaker sir, आपको ये आइटम नंबर 19 को आप रीड आउट कर दीजिए, तब उसका हिसाब से पास कर देगा सर। ठीक है, 19 को लेते थे। 19 को 19 1 and 2. Yes, sir. We'll take up item number 19. Now, next is item number 19, subpart 1, introduction of the Arunachal Pradesh appropriation, vote on account number 2, Bill 2024. The Deputy Chief Minister and Minister in charge for Finance may seek to move for leave to introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce the Arunachal Pradesh appropriation vote on accounts number Bill 2024. Now, the question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may now introduce the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to introduce the Arunachal Pradesh appropriation vote on accounts number 2, Bill 2024. The Arunachal Pradesh appropriation vote on account number 2, Bill 2024 is introduced. Item number 19, subpart 2, consideration and passing of the Arunachal Pradesh appropriation vote on account number 2, Bill 2024. Now the Deputy Chief Minister and Minister in charge of Finance may seek to move the consideration of the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh appropriation vote on accounts number 2, Bill 2024 be taken into consideration. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2 and 3 and the schedule to do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 and 3 and the schedule are adopted. Now question is that clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister may move for passing of the bill. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh appropriation vote on accounts number 2, Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. No. The Arunachal Pradesh appropriation vote on account number 2, Bill 2024 is passed. So, honorable members, I adjourn the House for lunch and we'll come back by 1 hour is 2:30, 2:15. Okay, then all are requested to come back by 2:15. Now, all are requested to go for delicious lunch hosted by Honorable Deputy Chief Minister and Minister Finance. Proceed to banquet hall.
Consideration. Good afternoon, honorable members. Now we will take up bills for consideration and passing. Sri Pema Khandu, Chief Minister, may move the motion for consideration of the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. Members desiring to take part may do so. Thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable CM, Pema Khandu, sir. Honorable DCM. You may just address the chair, please. Council of Ministers. Honorable member, when you speak, just address the chair. This is not a public speech. Okay. Sorry, sir. सबसे आज हमारा 5 साल का जर्नी में सबसे आज मेरा एक खुशी का दिन है, सर। तो आपको सबसे पहले ये बिचम का लेके तो बिचम समाज का और आका समाज का और हमारा पुरिक समाज का बरसों साल से, सर, ये 27 इयर्स जो पुराना जो डिमांड है, तो वो लोग का हमारा ये आका भाई लोग का और मेजी भाई लोग का और पुरिक समाज का पूरा डील डाट को मैंने समझा और वो लोग का डिमांड था कि हमारा कोई स्कैमिंग का साथ में कोई डिप्रेव कोई ऐसे कोई कुछ कार्रवाई नहीं किया, लेकिन वो लोग का एक पुराना एक डिमांड था कि आपको स्कैमिंग से लेकर स्कैमिंग हमारा ये लदा सर्कल से लेकर और बाना सर्कल से लेकर, सर, तो आपका एक वेस्ट कामिंग नफरा से लेके तो वो लोग का पुराना डिमांड था कि हर गांव बुरे से लेकर हमारा वेल विशर से लेकर युवा लोग से लेकर तो काफ़ी वो लोग डेलीगेट आया, तो वो लोग का इमोशन का साथ वो लोग का सेंटीमेंट का साथ और ये बिचम डिस्ट्रिक्ट जो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए है आज हमारा लीड बाय पेमा खांडू सर का सरकार में आप सभी को इस सदन में मेरा एक अनुरोध है, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग का एक कंसल्ट मिनिस्टर सभी का एक सपोर्ट करते हुए हमारा ये बिचम डिस्ट्रिक्ट को आप लोग ने गहरे दिल से निर्णय लिया और इसलिए है मैं सभी हाउस को और सभी हमारे कंसल्ट मिनिस्टर हमारा ये ऑनरेबल सीएम और सभी को हमारे बिहाफ ऑफ बिचम सजोलंग समाज और आका समाज हमारा पुरिक समाज का ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। श्री डोंगरू संजू। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक दो शब्द आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री छोनामिन जी को और पूरे उनके कैबिनेट मिनिस्टर और जितने भी जो ऑनरेबल मेंबर्स को मैं सजोलंग ओप्री और आका समुदाय की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सदन में ऑनरेबल जो मेंबर्स लोग हैं सभी को पता है ये बहुत पुराना ही डिमांड था, ये हमारा जो बिचम डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड था, तो ये करीब 30 साल जैसा हो गया। तो 1994 को ये हुआ था, तो अभी 30 साल करीब हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे भी ये बिचम डिस्ट्रिक्ट डिमांड करते करते आज हमारा बीच में नहीं है बहुत सारे लोग। और कुछ जो जवान था उस समय में जो अभी बुरी हो गया, तो उन लोग का भी अभी भी ये सपना हमेशा रहा कि हम
नहीं मरने से पहले बिचुम डिस्ट्रिक्ट जैसे भी होना चाहिए। तो ये तकलीफ को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जाना पहचाना, बहुत सा आदमी आया गया, सरकार आया गया, लेकिन ये ऐसे सरकार है जो हमारा जो दुख तकलीफ को समझा और साबित कर दिया। ये सरकार जो सिर्फ विकास करने वाला सरकार है और दूसरा का दुख दर्द को समझने वाला सरकार और जो विचार की बैठा उसको जोड़ने वाला सरकार है, ये साबित करके ये सरकार ने दिखाया। इसलिए फिर से मैं पूरी सजलांग प्रिय और आका समुदाय की तरफ से तहे दिल से फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर ये ऐसे कोई हम लोग कोई डिप्रेट भी नहीं है, जैसे हमारा जो एक पहचान जो हम लोग नहीं दिखा पाता है, जैसे कि हम वेस्ट कामेंग, कुछ लोग वेस्ट कामेंग में है, कुछ मिजी आका, और कुछ लोग ईस्ट कामेंग में है, कुछ आका मिजी लोग। तो माने हमारे जो बॉम्बदिला में भी हमारा करीब हमारे मुंपा बाई लोग 60-70,000 पॉपुलेशन है। हमारा जो मिजी बाई लोग वहाँ 10-15 ऐसे गैप हो जाता है, तो अपना पहचान हम लोग नहीं बना पाता है। तो हमारा ईस्ट कामेंग जो मिजी आकाश लोग है, तो हमारे निशी बाई लोग बहुत काफ़ी पॉपुलेशन है, तो हम लोग पॉपुलेशन लेस का वजह से अपना पहचान को हम लोग मतलब नहीं बना पाता है। तो आज आप लोग ने ये डिस्ट्रिक्ट बना, अपना एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो हमारा भी एक पहचान हम लोग बना सकता है। इसलिए उसके लिए हम लोग डिमांड किया, डिपेंड हो के भी नहीं है, हम लोग वेस्ट कामेंग भी खुश था और ईस्ट कामेंग भी खुश है। तो इसलिए जितने भी जो हमारे जो प्रदेश का जो जनता को मैं जो अपना डायरेक्टली इनडायरेक्टली और जो मॉरल सपोर्ट दिया, वो हमारा मिजी और प्रिय और आकाश समुदाय की तरफ से उन लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, मुझे विश्वास है और पूरा साथ देंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना डिमांड था और जेन्युइन डिमांड है, और एक परिवार दो बिछड़ की बैठा इसको जोड़ने का ये था। तो इसलिए मैं फिर से मैं ये सरकार को, बीमा खंडू सरकार को, हम लोग आका सज्जलांग प्रयोग की तरफ से मतलब हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग याद रखेंगे और हमेशा एक बैकबोन की तरह हमेशा आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। JK Tako. I'm standing up. No, please text me. That will be much easier for me to call. Thank you, Honorable Speaker sir. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए करा हूँ। मैं बिचम और हमारा कई पैनर का डिस्ट्रिक्ट जो आदमी लोग से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ, क्योंकि आप बिना तकलीफ करते हुए आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का ओर से, मेरा अपना तरफ से मैं सारा जनता को उस डिस्ट्रिक्ट का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और ऐसे मैं याद करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को तारीफ करने का एक थोड़ा सा मौका मिला, इसलिए कि कुरोंग जैसे हम लोग निशी खास करके निशी बेल्ट में हम लोग देखा है कि पपुम बारे कुरोंग में कोई डिस्ट्रिक्ट मांगने में हम लोग इतना तकलीफ संघर्ष करना पड़ रहा था कि बर्न कॉल करना पड़ रहा, क्या क्या एजुटेशन करना पड़ रहा था, तो भी इतना लेटली हम लोग को डिस्ट्रिक्ट मिलता था, तकलीफ से मिलता था। तो आज का गवर्नमेंट इंटेंशन क्लियर है कि जहाँ कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए, जियोग्राफिकली गैपिंग को क्लियर करना चाहिए, तो डेवलपमेंट हर जगह पहुँचना चाहिए। उस इंटेंशन में देखिए कि आज इतना अच्छा से जीनून वाला को हमने कई पंजर बोलो या बिचुम बोलो, एक जीनून है कि सारा कम्युनिटी को अपना अपना आइडेंटिटी देने का एक काम किया है, एक कम्प्लेक्स ना सोशल हार्मनी हो। तो इसमें डेवलपमेंट का हर चित्र में पहुँचो, इस लाइन में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट, पहले हम लोग ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग था कि एक डिस्ट्रिक्ट मिलना, सर्कल मिलना, कुछ मिलना है तो गवर्नमेंट से लड़ना पड़ रहा, ऐसे एक स्थिति था कि हमको लड़ना होगा, एजुटेशन करना होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल करना होगा तभी मिलेगा, ऐसे था। लेकिन आज जेन्युइनली अप्रोच अगर किया जाए तो भी मिलता है, ये आज महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जेन्युइनली जो अप्रोच कर रहा है, जो जस्टिफाई है करके जो अप्रोच करते हैं, उसको भी डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। तो उस लाइन का जो हमारा सोच को बदलने वाला चीज़ है ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन वाला, तो उस सोच को बदलते हुए सारा जेन्युइन की कहाँ क्या होना चाहिए
उसको बिना संघर्ष करके, बिना पॉलिटिकल टर्मोइल करते हुए हम मिल सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में आया हुआ है हम। तो सर, मैं ज़्यादा नहीं बोल के हुए सारा चीज़ करते हुए, अगर उस लाइन में ये गवर्नमेंट का अभी इस सोच को लेके अगर चले तो एक ही लास्ट और जेन्युइन अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट बने जियोग्राफिकल कंसर्न में देखे, चाइना बॉर्डर का देखते हुए, सारा एक डिफ्राइव कंस्टिट्यूंसी को देखते हुए आज तक जितना भी मदद कर रहा है इस गवर्नमेंट ने कि हमारा ताली को एडीसी इंडिपेंडेंट बना दिया, पिपसोरों एसडीओ बनाया, 2 नया सर्कल दिया, न्योर सर्कल, बड़ा सर्कल दिया। तो अब हम भी थोड़ा ग्रो अप कर रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रहा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला दिन में आज से लेके 2029 तक मुझे ताली को भी एक डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, ये आशा का साथ अपील करते हुए मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। थैंक यू। सही है, सही है। नेक्स्ट विलंबोताई। Mr. Speaker, sir, I rise here to take part in the same topic. And first of all, I, on behalf of my party, extend the sincere thanks to the government of Arunachal Pradesh for creating 2 districts, Bisom and Kei Panyor, and also extend my best wishes on behalf of my party to all the populace of Bisom and Kei Panyor for getting new districts. Sir, having said this, I being from Siang Belt, I am also little selfish like my Magbuji K, that there is also a proposal which is in the pipeline for creation of districts, one more districts in Siang Belt. With the hope and high expectation, I put forward my grievances to the government of Arunachal Pradesh to create one more district in Siang Belt in near future. With this, I once again extend my sincere thanks to government and also best wishes to the people of Bichom and Kei Panjar. Thank you, sir. I think a lot of petitions are coming in for new district. Yeah? Sri Mamanatum. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024, ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिल लाए हैं सदन पे कि पंजर डिस्ट्रिक्ट एंड बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अभी से नहीं, ये बहुत सालों से एक लोअर सबमसरी से बाइफर्केशन होकर अपना की पंजर डिस्ट्रिक्ट का काफी सालों से लोगों का एक जनता का मांग था। और बिचुम डिस्ट्रिक्ट कुछ वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, कुछ ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे माननीय ये ऑनरेबल मेंबर गोरख प्रदोंग जी ने आपको बताया कि ये दोनों हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैं उस 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं वहाँ का विधायक हूँ, और ये लादा बामिंग 8 बामिंग का वहाँ का विधायक है। और ये हमारा ही 11 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारा 8 बामिंग से कार्व करके ये डिस्ट्रिक्ट नपंगफुंग में जो नाफरा से मार्ज होकर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रपोज किया गया है। मैं इसके बारे में सदन में अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जब संख्या ज़्यादा होते हैं और लोगों को दूर स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो अपने सरकार टीम अरुणाचल की सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से पूरे सरकार की जो नीति है, सरकार की जो बेनिफिशियरी है,
चाहे वो भारत सरकार के हो, चाहे वो प्रदेश सरकार के हो, जो लोगों तक जो इजी से जो पहुंचने के लिए जो काम कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कामिंग बेल के बारे में आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि हम उन दिनों में कामिंग बेल्ट, उन दिनों में हम 5 जिले हुआ करते थे। हम कामिंग, लोहित, सबमश्री, इस प्रकार का हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसमें हमारा कामिंग बेल्ट हुआ, जिसमें 1965 को जो फ्रंटियर हुआ करता था, उस समय हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट का, चारों डिस्ट्रिक्ट का, अभी हम लोग हमारा ईस्ट कामिंग हुआ, तवांग हुआ, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट हुआ, एंड उसमें 1965 में हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट बोमदिला पे। एंड ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट जो बाइफर्केशन हुआ कामिंग डिस्ट्रिक्ट से 1 जून 1980, एंड वहां से तवांग बाइफर्केशन हुआ 6 अक्टूबर 1984। उसके बाद हमारा जो पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पे 2018 अपने सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पाके केसंग को भी एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया। मेरा कहने का मतलब कि हम अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली इतना वास्ट है। हाँ, जरूर हम जनसंख्या में कम है, बात हमारा इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारा लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट, लोगों को डोर स्टेप तक सरकार की सर्विस मिले, इस प्रकार की सोच को लेकर वो पूरे जहाँ जहाँ में लोगों के लिए सुविधाएं के लिए डिस्ट्रिक्ट हम खोला जा रहा है। अब इसमें ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में 2011 सेंसस का हिसाब से 78,690 पॉपुलेशन है 2011 सेंसस में। बात अभी 2024 अप्रोक्सीमेटली ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है 1,10,000 से एबव है। तो इसी पे अभी इंटर ईस्ट कमिंग में हमारा जो ज्योग्राफिकली एरिया है कि 4,134 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से लादा सर्किल में 792 स्क्वायर किलोमीटर है जो लादा सर्किल में। यह बहुत बड़ा दुख की बात है कि लादा सर्किल जिस समय बाइफर्केशन हुआ कामिंग डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट कामिंग का, उस समय में सीओ सर्किल 1980 को वहां सीओ सर्किल स्थापना हो चुका है। और मैं सदन को ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के पेमा खांडू जी के नेतृत्व में लादा में अभी रास्ता गाड़ी पहुंचा हुआ, अभी जगह मोटरेबल रोड अभी 2 साल पहले 2 साल पहले वह गाड़ी अभी मोटरेबल रोड सप्पा टू लादा अभी गाड़ी पहुंच रहा है। ये बहुत दुख की बात है। 1980 से, जिसमें से वहां में हमारा वहाँ समुदाय रहते हैं कि पूरा साजलोंग समुदाय, जैसे हमारा ऑनरेबल ये जो मेंबर दोनों साहब ने जो आप बताया कि ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में कुछ पार्ट लादा में हमारा साजलोंग समुदाय रहते हैं, कुछ प्रोइक समुदाय है, और हमारे ही चुनाव क्षेत्र में बाना में आका समुदाय, और ये करीब करीब 9,720 करीब की जनसंख्या में है, जिसमें से उनका भाषाएं, उनका स्पिरिचुअली और कपड़ा जो मानना रहन सहन पूरा सेम है। बात उन दिनों में इतना सालों से जो मांग था कि 27 साल 30 साल से मांग था कि हम सब भाई को इस कमिंग का जो आका सजलों प्रोइक को एक कतई कर दे किया जाए, कि सरकार से कितने सालों से लोगों का मांग था। अभी बाना में जब एस्टैब्लिश हुआ ऑन 2009 को ईएसी का एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें से 150 स्क्वायर किलोमीटर जो आउट ऑफ
आउट ऑफ 4,134 स्क्वायर किलोमीटर में से अपना वहाँ लादा में 792 एंड बाना में 158, जिसमें से सेंटास में 2011 में 1,488, नाउ अप्रोक्सीमेटली 1,876 का जो सेंसस अभी का 2024 में जो गिर रहा है। मेरा जो अध्यक्ष जी, आपको आपका माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारा इस कमिंग के लोग, खास करके कुछ लोग कुछ दिन पहले एजिटेशन लॉन्च हुआ, हमारा वहाँ का निशी बाई लोग, मैं निशी बाई लोग का भी, निशी बाई का भी कोई ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना है, उनका भी सपोर्ट है कि उनका एक ही डिमांड था कि सरकार जो आका समुदाय और निजी समुदाय के लिए जो हमें सर्किल हेडक्वार्टर बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसको हम लोग को देकर जाइए। आप लोग डिस्ट्रिक्ट, आपका तो बिचम आप लोग जा रहा है, लेकिन इसको आप लोग लेकर मत जाइए इस आपका डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको कैबिनेट में प्लेस हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना दोनों समुदाय का दुख को और दोनों समुदाय का मांग को कैबिनेट में ये निर्णय लिया कि ये काल को अगर मर्जर होता भी है तो शिफ्टिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की तरफ से फंड दिया जाएगा बोल के कैबिनेट में ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया गया है। तो इसलिए मैं काल भी उन लोगों का 2 दिन का एक एजिटेशन करने जा रहा था। हम लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अभी छोड़िए, जहां शांति है वह अनौती है, जहां शांति है वह अनौती है। तो इस प्रकार का, इसलिए ये सदन में आप लोगों को आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं कि बाना और लादा मिलाकर नाउ 4,711 का जनसंख्या में बिचुम डिस्ट्रिक्ट में इस कमिंग से मर्जर होने जा रहा है, जिसमें से बाना में अपना लादा से 17 ब्लेस एंड बाना से 11 ब्लेस और लादा से 17 ब्लेस, वो पूरा अपना आका समुदाय और सजलुंग समुदाय जो मार्च करने जा रहा है। मैं बहुत दुख के साथ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत दुख के साथ आपको सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि हम वहां में निशी बाइलू जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन वहां में कोई भी सरकार का कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई इंटरव्यू हो, कोई भी चीज में हमारा वहां का सपा का जो सजलोंग समुदाय और हमारा आका समुदाय कभी भी कम्पीट कर नहीं सकते। सोशियो इकोनॉमी में वो इतना कम्पीट कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपना मंत्र है, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जो इन सजलुंग समाज और पूरे समाज को जिस प्रकार से आज जो एक डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है सर, ये बहुत ही आने वाला उन सबका भविष्य का एक उजाला, और ये सरकार, आपकी सरकार को सर ये हमेशा ये समुदाय कभी भूलेगा नहीं, याद करेंगे। ये बहुत ही एक वो इतना खुशी, इतना हमारा, अगर हमको कई लोग कहा कि अरे मंत्री जी आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों बेच रहा है, क्यों उनको जाने दे रहा है। हमने बहुत सालों से देखा कि वो अपना जगह में बाना में जो 158 स्क्वायर किलोमीटर है वो हमारा कोई निशी बाई का किसी का जमीन नहीं है। जो लादा में 972 स्क्वायर किलोमीटर है वो वही का सजलों समुदाय का ही जमीन है। वहां में किसी का जमीन को वह नुकसान नहीं हो रहा है, बाउंड्री क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है। तो इसलिए मैं खास करके आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक और की पंजर का जो डिस्ट्रिक्ट हमने जो अभी जो पास करने जा रहा है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक। की पंजर में भी क्या समस्या है अध्यक्ष महोदय, वहां में भी ऐसा एक समस्या है कि लोअर सुबनसिरी का कोई भी नौकरी का अगर कोटा होता है, इंटरव्यू होता है, तो हमारा पता नहीं बाई लोग पूरा नंबर 1 नंबर 2 हमारा निशी बाई लोग आ सकता ही नहीं है।
दोनों समस्या को समझ के, ऐसे समस्या को समझ के ये सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ये समस्या को जानकर अपने पूरे प्रदेश को सरकार, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, लोगों को सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए जो जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, ये बहुत ही ये कभी जिंदगी में ये सरकार और टीम अरुणाचल के सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये कभी भूलने वाला नहीं है। और साथ में उतना ही नहीं, सरकार जब से सार का जो टीम अरुणाचल सरकार आने के बाद पहला ऐसा सरकार है जो सरकार आपकी द्वार और सेवा आपकी द्वार, इस प्रकार का जो सरकार ने अरुणाचल प्रदेश का सरकार ने, टीम अरुणाचल का सरकार ने जो काम किए हैं, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ही तेजी का साथ और डेवलपमेंट हम लोग देखने को मिलेगा। और उसमें हर प्रकार का, और खास करके इसमें और एक अहम बात है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ये नपोपुंग, ये बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, समय नहीं लेते हुए मैं सभी हमारा आका समुदाय, साजलुंग समुदाय और जितने भी ये अब सभी को, जो बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट का सभी लोगों को मेरे तरफ से मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपके लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री जी के पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, जो आपके इतने सालों से जो सोच रहा था, जो कितने बार कोशिश किया। और सार तो इतना ही नहीं, सार जिस समय 2016 जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार ये डिस्ट्रिक्ट को पहले बार सार ने कोशिश की कि इसी डिस्ट्रिक्ट को पहले इसको डिस्ट्रिक्ट हम लोग बिक्चुम डिस्ट्रिक्ट को दे दे। इसमें कोई टेक्निकल क्लियर नहीं होने का वजह नहीं हो पाया, तो इसलिए आप सबको कांग्रेचुलेट करते हुए, और मैं खास करके हृदय से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देते हुए, लोगों का दुख दर्द को समझकर और लोगों का सोशियो इकोनॉमिक किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसा हो, वो समझकर ये सरकार ने ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और पूरे टीम, सदन के जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलएस और जितने भी सदन में उपस्थित सभी ऑनरेबल मेंबर्स को, और साथ में हमारा तीनों समुदाय को कांग्रेचुलेट करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से, अच्छा से ये बिल आज इसी में पास हो। तो इसके लिए इस चंद शब्दों आपने माना अध्यक्ष जी आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री ताना अलीतरा। मैं इस सदन के जरिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14 दैमुख का सारा जनता की तरफ से मैं बिचुम और क्रिय पान्योर का जितना जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन किया है, इसको हमारा सरकार बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे सरकार ने जो हमारा पब्लिक को संघर्ष करने नहीं दिया और पब्लिक का जो अटैचमेंट को देखते हुए और दुख दर्द को देखते हुए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र पढ़ा है, उस मंत्र को पूरा का पूरा ध्यान देते हुए उन्होंने जो काम किया है, हमारा सरकार जो पेमा खांडू जी का सरकार जो काम करके हमारा सुविधा के लिए काम किया है, तो इसके लिए मैं मेरा जितना पब्लिक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और साथ साथ में कई और बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जितना जनता को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि ये हमारा सरकार का जो मंत्र
जो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र रखा है उसको पूरा पूरा हम लोग ध्यान दिया है और हमारा सरकार आप सभी को ध्यान देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरा का पूरा ध्यान देते हुए आप लोग ने बहुत बार कई और पान्योर और बिचुम लोग बहुत बार आप लोग ने प्रयास किया है इस चीज को मिलने के लिए। और हमारा जो पेमा खांडू जी का लीडरशिप में इन्होंने आप लोग को पूरा का पूरा ध्यान दिया है और आप लोगों को विकास के लिए क्लोजनेस और पब्लिक का डेवलपमेंट को क्लोजनेस में लाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो मैं हमारे जनता की तरफ से और 14 नवंबर की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत आप सभी को कांग्रेचुलेट करता हूं। और इसी तरीका से हमारा सरकार, हमारे राज्य की सरकार इस तरीका से आप लोग को पूरा ध्यान देगा बोल करके, और आप लोग भी सरकार के साथ जितना कई पायोर और बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो नया जन्म लिया है, आप लोग ने पूरा का पूरा हम लोग का सरकार के साथ देगा बोल करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। और आने वाला साल में हमारे राज्य को आप लोग का नया डिस्ट्रिक्ट विकास के तौर पे ले जाएगा बोल करके मैं पूरा विश्वास करता हूं। मेरा सरकार आप लोग का साथ है और आप लोग हम लोग का साथ रहेगा बोल करके पूरा विश्वास के साथ मैं इस शब्द के साथ मैं अपना बात को विराम रखता हूं। थैंक यू। श्री न्यातो तुकम। स्पीकर सर, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। सबसे पहले तो मैं बिचम और कई पांजोर के जितने भी जनता है आप लोगों को 23 तलिया एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से और मेरे अपनी तरफ से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है आप लोगों को भी थैंक्स करता हूं। आप लोगों ने अरुणाचल के प्रगति के लिए इस तरह से जो काम किया है उसके लिए हार्दिक बधाई है। तो ऐसा है, कानी बाबी पानी पिला, रानी बाबी पानी पिला। तो किसी देवर ने जो अपने बाबी जो कानी है उसको व्यंग कसते हुए कहा कि मुझे पानी पिलाना बाबी, तो पानी नहीं पिलाया गया। लेकिन जब उसने कहा कि रानी बाबी मुझे पानी पिला, तो प्यार से जब कहा तो उसे पानी पिलाया गया। ठीक उसी तरह से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लड़ झगड़ के कोई चीज़ मांगा नहीं जाता, जोर जबरदस्ती कोई चीज़ मांगा नहीं जाता। जब प्यार से मांगा तो पाया। लेकिन पुराने ज़माने में जो हम देखते थे, जो 2001-2 में मैं भी उस समय इस सदस्य का ये सदन का मैं भी सदस्य था, तो कई लोग थे जो लड़ने झगड़ने में उतारू थे। उस तरह से डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं जाता, उस तरह से तो माहौल खराब होता है स्टेट का। तो अभी जिस तरह से आप लोगों ने मांगा, जिस तरह से पेमा खांडू सरकार ने दिया, ये तरीका होता है। तो आपने जब स्पीकर सर आपने जब मौका दिया तो हाथों हाथ मैं भी इसका फायदा उठा लेता हूं। आपने अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और कामले डिस्ट्रिक्ट को लेके, हालांकि हम दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग हम प्यार से रहते हैं, जब बाउंड्री बहुत क्लोज है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, आज भी प्यार से जीते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन ये जब कामले डिस्ट्रिक्ट को जब क्रिएशन किया है उस समय थोड़ा सा बेग सा रह गया, थोड़ा सा कुछ चीज़ ऐसा रह गया जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये है कि आगे जाके कहीं लोगों के बीच ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसीलिए मैं सदन में मैं ये बात को रखना चाहता हूँ
ये जो बाउंड्री एरिया है कमले और अपर सुबनसिरी का, इस तरफ कमले के तरफ भी अपर सुबनसिरी का बहुत सारा, जिस तरह से मामा नातुंग जी ने कहा है, जिस तरह से जो अपर सुबनसिरी का जितना भी बहुत इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारा ये है ऑफिसेस है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो कमले की तरफ है अभी का, उन लोगों के कहने से। अभी ऐसा है जैसे अपर सुबनसिरी का ये है, अभी जैसे पावर ग्रिड हुआ, जैसे वेटनरी हुआ, बहुत सारा है जो अपर सुबनसिरी का है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो कमले का तरफ चला गया। लेकिन इस माननीय मेंबर, आप जिस चीज के डिस्कशन है उस पर थोड़ा कंसंट्रेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं इसलिए पूरा अपर सुबनसिरी चला गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सरकार से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आए दिन इस पे थोड़ा सा ध्यान देके इसको क्लियर कर देने से हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट स्पीकर सर, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 4 विधायक लोग हैं, वहाँ भी आने वाले दिनों को इसके ऊपर थोड़ा सा सरकार का ध्यान होगा। पेमा कंदू साहब, हम लोग तो दुआ करते हैं, वैसे भी आप वापस आएंगे असेंबली इलेक्शन के बाद, हम इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कंग्रेचुलेट पीपल ऑफ कईपान्योर एंड बिचुम डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू वेरी मच। श्री तबा तेदिर। मिस्टर स्पीकर सर, ये जो अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 में समर्थन में सर मैं खड़ा हूँ। और सबसे पहले तो मैं सर अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इसको कैबिनेट पास करके यहाँ बिल लेके आया। और इस अनडिवाइडेड सुबनसिरी जो आज 7 डिस्ट्रिक्ट में बांट गया है, पपुमपारे, कुरुंगकमे, करातादी, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी से अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस बच्चे को एक परिवार देना पड़ता है। और उसी प्रकार आज हम कई पंजर भी अपनी जो डिमांड है 1999 से हमने डिमांड शुरू किया, और आज इतने सालों के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इस सदन में लेके आया। और इस जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1972 में हमारे यूनियन टेरिटरी बना, 0 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उद्घाटन हुआ। और हमारी एक्चुअली जो है एजाली जो है 0 के बिल्कुल सामने में है। सामने होते हुए हमेशा लोग कहते हैं कि जो घर ट्रेन स्टेशन के घर नज़दीक वाला हमेशा ट्रेन मिस होता है। तो उसी प्रकार हमारा सेक्शन एक्चुअली कि लोग बिल्कुल 0 के पास है, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटी में हम हमेशा पीछे रह गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सेक्शन एससी के लोगों ने बहुत सालों से इसकी आवाज़ उठाई कि हमें एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट दिया जाए ताकि हमारे जो प्रगति आगे बढ़े। अब हमारे आगे जो हमारे एक प्रभाग स्पीकर ने मामा नातुंग जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारी 0 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद हम यहाँ 2 समुदाय रखते हैं, हमारे अपतनी समुदाय और हम निशी समुदाय। दोनों समुदाय आपस में मिलजुल कर रखते हैं। लेकिन ये एक दुख की बात है कि एक 0 जो है हमारे अपतनी समुदाय की लोगों की ज़मीन है। उस ज़मीन पर ना हमारे निशी समाज समुदाय के ना कोई ज़मीन की टुकड़ा है, ना न्योकुम ग्राउंड है, ना कोई मार्केट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने बहुत सालों से लोगों की डिमांड करते करते ये आज इस मुद्दे तक पहुंचा। और इसको हमारे 2 समुदाय की जो हाईएस्ट फोरम है तनिसुपुर दुकुम एंड निशी एलआई सोसाइटी ने 31 जनवरी 2021 को एक बैठक किया, जिस बैठक में दोनों समुदाय ने निर्णय लिया कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करें कि हम एक अलग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाए, कई पंजर के डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जाए, जिसमें हमारी ऑन द लाइन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री के मैप के हिसाब से हमें डिमांड देना है बोल के। उसी प्रकार हमारी दोनों समुदाय तनिसुपुर दुकू और हमारे निशी एलआई सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट किया। उस मेमोरेंडम के बाद दोबारा हमारे जॉइंट मीटिंग हुआ दोनों समुदाय की 28 जून 2022 में। दोनों ने दोबारा रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपने अपने
जो बाउंड्री है, अपने अपने जो पौर पादर की जो जमीन है, जिसका भी डिस्ट्रिक्ट में पड़े, उसकी उस जो हक मालिक के हकदार होगा उस समुदाय के होगा करके उसने रेजोल्यूशन पास करके, और तीसरी बार दोबारा 14 अगस्त 2022 को फिर समुदाय ने, दोनों समुदाय ने मिलके उसको रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया है। आज मैं इस समुदाय, दोनों समुदाय की जो सरकार को मेमोरेंडम दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको हमें आज कैबिनेट में अप्रूव करके इस सदन में लेके आया, और इसमें देखा जाए तो हमारे जो कई 5 जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसमें हमारे 1208.97 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया होगा, और हमारी 2011 के सेंसस की पॉपुलेशन की तरह देखा जाए तो 25,399 है। अगर आज के दौर में देखा जाए तो उसकी पॉपुलेशन कम से कम 30,000 प्लस होंगे। और यही नहीं, इस जो डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा उसमें हमारे 181 विलेजेस है। आज भी दुख के बाद साथ कहना पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिल्कुल सामने में है, कैपिटल भी बिल्कुल सामने है, लेकिन आज हमारा इस 181 विलेजेस में आज भी बहुत से गांव जो रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके वजह से अगर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, अलग से कई पंचायत डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, तो यहाँ हमारे लोगों की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी पेज और आगे बढ़ेगा और आगे होगा। और इस जो कई पंचायत के डिस्ट्रिक्ट जो होगा उसमें हमारे 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल होगा, आपकी याजाली सर्कल, याचिली सर्कल, दीद सर्कल, पिस्टना सर्कल, परमपतु सर्कल और कोड़ा सर्कल है। और इसके लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए हमारी एक्चुअली में फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे पब्लिक ने लोगों ने डोनेशन दिया है कि 322 हेक्टेयर्स जमीन हमारे एक्चुअली में दिया है। उसके बावजूद भी हमारे पास और भी उसमें जमीन है जो डिविजनल कमिश्नर के लिए वेस्ट के लिए जो जमीन दिया गया है 14.82 हेक्टेयर्स जमीन है, उसमें अभी भी सिर्फ थोड़ा ही जमीन को यूज किया है डिविजनल कमिश्नर के लिए। इसलिए जो जमीन है हमारी एक्चुअली में अवेलेबल है, और सरकार ने जो हमारे कैबिनेट ने जो एक्चुअली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए अप्रूव कर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर पर 16 एक्चुअली के आबादी लोग बहुत खुश है, और हम अपने लोगों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस सदन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो लोग 1999 से जो डिमांड पड़ा उसको आज सफल होने के जा रहे हैं। और इसके साथ हमारे जो बिचुम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है 1984 से डिमांड है, 40 साल के बाद आज डिमांड को फुलफिल करने जा रहे हैं। और हमने भी इस एक अफसर होके नाते उस इलाके में भी गया, उस इलाके में जाके देखा कि हमारे साजिलुंग समुदाय, हमारे अक्काक्रो समुदाय और पूर्विक समुदाय की वहाँ की स्थिति क्या है, और इसलिए उसको एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट देके उसको हम जैसे बाकी लोग डेवलपमेंट आ रहे हैं उन लोगों को भी, उन समाज को भी हम आगे लेके आना पड़ेगा, उन समाज को भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट देके, ताकि डेवलपमेंट जो बाकी जगह में मिलता है उन लोगों तक डेवलपमेंट को भी हमें प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि हम सब एक अरुणाचल है, पेन अरुणाचल है, तो सभी को साथ के लेके चलना है। और मैं इस सदन को जितना भी सदस्य है सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब हमारे बिचम डिस्ट्रिक्ट और हमारे कई पंचायत डिस्ट्रिक्ट को आज बिल को सब लोग साथ मिलकर इसको पास कर दिया जाए, और हमारे बिचम डिस्ट्रिक्ट के लोग और हमारे कई पंचायत के लोग आप सबको इस 7 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बहुत बहुत आभारी रहेगा। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सदन हमारे इस 2 डिस्ट्रिक्ट के बिल को पास करेगा कहते हुए मैं अपने भाषण में यहीं बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्पीकर सर, मैं आपका माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 2 नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उन डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सारा जनताओं को बहुत भला काम की है। इनका भी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और आगे बढ़ेंगे। ये भावना रखते हुए दोनों नए डिस्ट्रिक्ट के सारा जनताओं को मेरी ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खास करके हाल ही में मैं
बाना में एक फेस्टिवल में गए तो ये डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का बात को लेते हुए मुझे भी रिक्वेस्ट कर रहा था, सर इसमें भी हम लोग को मदद करना है। तो आज लकीली कुछ ही दिन का बाद तो बिचम डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ और इसमें हमारा ऑनरेबल मेंबर्स, वहाँ का विधायक मामा नतुंग सर का बहुत ही योगदान है। तो मैं पुरोहित समुदाय और अक्का समुदाय, सजलंग समुदाय के सारा लोगों को मेरी ओर से बधाई देता हूं और उनको कहना, आप जैसा मुझे रिक्वेस्ट किया था मैं भी कैबिनेट में रिक्वेस्ट कर दिया और आपका आज कामयाब हुआ आगे बढ़ने का, और उसका जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट मिला है उसका अनुसार से मेहनत ही दुगुना करना पड़ेगा ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट को पहुंचने के लिए। रही की पांजूर डिस्ट्रिक्ट, ये पिछले एक साल से हम लोग ने इसका ऊपर में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं निसी एंड आपातनी समुदाय का बीच में। यहाँ एक लकी पार्ट ये है कि हम लोग का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट सरकार का या निजी का इस्टेब्लिशमेंट की एक दूसरा से इंटरवेंशन नहीं है। निसी का भी कोई भी हमारा सेक्टर वाला हमारे पास नहीं है, हमारा आपातानी वाला भी निसी का पास नहीं है। ऐसा होते हुए भी एक चीज हम एंटिसिपेट हमेशा करता हूं, बार बार जब भी मीटिंग करता हूं इसी चीज को लेके ये करते हैं। कारण में ये अनुभव हुआ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट देते देते थक गए। हमने 6 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, शुरू से लेके अपर सुबनसिरी से लेके पपुमपारे, कुरुंकी में, कारादादी, कामले से लेके सारा मेरा ही डिस्ट्रिक्ट से निकला है। तो ये देते हुए मुझे एक अनुभव हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट तो करते हैं सर्कुल हेडक्वार्टर को लेते हुए या उसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हम क्रिएट कर देते हैं और किसी भी तरफ से उन लोग एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम लोग ध्यान देते नहीं है। मैप को ध्यान नहीं देने के वजह से ग्रिड तो ली नहीं है, मैप हम अंदाज में ड्रॉ करके सर्कुल हेडक्वार्टर के हिसाब से हम एक डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट करके डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते हैं, सर्कुल को कार्व आउट करके सर्कुल डिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा सर्कुल का कहां तक पड़ता है वो कभी हुआ ही नहीं है। अभी कमला का भी नहीं हुआ, अभी सारा जंगल है बोल के अभी हम लोग को महसूस नहीं कर रहा है। ऑल ऑफ देम आर डीप जंगल। आज जिस हिसाब से तदर साहब और हम दोनों के बीच में भी डिस्ट्रिक्ट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन जितना बाउंड्री ड्रॉ किया है इट इज ए डीप जंगल। पर होते हुए भी हमारा समुदाय, निसी समुदाय, दोनों ही समुदाय का जंगल से बहुत माने रखते हैं। हम जंगल में पूजा करते हैं, बेत कलेक्शन के लिए जाते हैं, पत्ता कलेक्शन के लिए जाते हैं। जब ऐसा जाते हैं तो ये स्पेशली युवा पीढ़ी का लोग सोचते हैं कि हमारा बाउंड्री उसका हिसाब से आपने इंक्रोच किया, इसका हिसाब से आपने इंक्रोच किया। ये हरदम होते रहता है, ये आगे भी होगा। एंड उसमें क्या होता है कि आज तदर साहब और हम दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हैं, कोई अनवान नहीं है। कल को अगर हम दोनों अलग पॉलिटिकल पार्टी होके दुश्मन होगा तो उसमें ये आग में घी का बराबर काम करते हैं। ऐसा ना हो, उसका अगर प्रिवेंटिव लेना है तो अभी जो भी हम लोग ने एयर मार्किंग बाउंड्री लाइन दिया है, दिस इज ए प्योरली पॉलिटिकल बाउंड्री है। इट इज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल ग्राउंड लेवल ऑफ द ओनरशिप। ये जब हम पब्लिकेशन करते हैं, हमने क्लियर कट इसको मेंशन कर देना है ताकि एक्स एंड वाई दोनों का जंगल बाउंड्री है और दोनों ही जानता है, सिवाय कोई नहीं जानेगा। जेड एंड एक्स और दोनों का जंगल का बाउंड्री है तो वो दोनों ही जानते हैं, सिवाय कोई और तो जानेगा ही नहीं है। और उसमें देखा गया है कम्युनिटी लैंड बोल के हम लोग का एरिया में बहुत कम है। एवरीबॉडी हैज गॉट एदर ए फैमिली जंगल और क्लान जंगल और ए इंडिविजुअल जंगल। पहले हम लोग मयांग बोलता था जो फ्रेंड सर्कल को, ऐसा भी जगह है जहां पर दोनों एंड टू एंड जंगल में बैठ के दोनों खाना खा के एक दूसरे से बात करके काम भी करते थे। इस भाईचारा और यूनिटी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ मैं सरकार से ये अनुरोध है कि
जो पॉलिटिकल मैप हम लोग किया है, दिस इज ए टेंटेटिव एंड पॉलिटिकल एंगल ओनली. इट इज नथिंग टू डू विथ एक्चुअल लैंड बाउंड्री करके आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलते हुए अगर इसको कर देगा, हमारा सरकार में इसका डिस्प्यूट का कोई भी बर्डन नहीं आएगा. सॉल्यूशन डिप्टी कमिश्नर टू कमिश्नर में लेके आराम से सेटलमेंट होगा और बहुत सा चीजें आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक भी नहीं पहुंचेगा और गांव तो गांव में ही सेटलमेंट हो सकता है. इसको ध्यान रखें, ये मेरा अनुरोध है. जैसा कि अभी हमारा अरुणाचल और असम इतना साल हो चुके हैं, इसका बाउंड्री एक्चुअल तो अभी फिक्स करने जा रहा है. इसमें से भी 70% ही फिक्स हुआ, 30% अभी भी बाकी है, फिक्स नहीं हुआ. लेकिन अरुणाचल भी काफी आगे बढ़ा, असम भी काफी आगे बढ़ा और इसको ग्राउंड एक्चुअल लेवल फिक्स करने के लिए हमको आज का डेट में भी 1 महीना 2 महीना भी नहीं होगा, इसमें साल भर भी लग सकता है और इसी को इंतजार करते रहेगा. देन हमारा सरकार का एक्टिविटी और गतिविधि रोक जाते हैं. इसीलिए टेंटेटिवली हम लोग अंडरस्टैंडिंग का साथ में आज डिस्ट्रिक्ट क्रिएशंस को हम लोग माना है और इसको वेरी वेरी टेकफुली पब्लिकेशंस और जो भी करना है सरकार का करना आप लोग का काम आएगा. ये बोर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आएगा, हम जो अभी नया क्रिएट हुआ और आगे क्रिएट करने वाला के लिए भी इस तरीका की ही काम आना पड़ेगा. उसको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के साथ में हम लोग करने के लिए जब हम नोटिफिकेशन इशू करेंगे उसमें एक पैराग्राफ कोई भी सूरत में डाल देना है ताकि आने वाला दिनों का प्रॉब्लम को रिजॉल्व इजीली कर पाए. ये मेरा इस सदन में अनुरोध है और मेरा पूर्ण विश्वास है इसको नोट डाउन करेंगे और इसको ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे. अंत में ये 2 नया डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुआ है, ये बहुत जेन्युइन डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है. इसी के लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल में ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेप यू हैव टेकन कि डेवलपमेंट इस एरिया में रैपिडली अभी ग्रो होगा और भाईचारा का साथ में सब मिलके जिएंगे. मैं इन चंद शब्दों के साथ वाणी विराम रखता हूं. Now the Honorable Chief Minister may reply. Honorable Speaker, sir, आज जो यहाँ पे बिल जो इंट्रोड्यूस किया है अरुणाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें कुल मिला के गवर्नमेंट की ओर से 2 नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्रपोजल है. और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी ऑनरेबल एमएलएस लोग इस डिस्कशन में पार्ट लिया, श्री गुरुक पोदुंग, श्री दोंगरू जी, श्री जिके जी, श्री लोमो ताइंग जी, श्री मामा नटुंग जी, श्री तना हाली जी, श्री न्याको डुकुम जी, श्री ताबा तेदिर जी और श्री तागे ताके जी, उन सभी मेंबर्स को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं. सभी लोग ने अपने अपना शब्दों में सरकार अभी जो कदम ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का जो इनिशिएटिव लिया है, उसको सभी लोग ने अप्रिशिएट भी किया है. वैसे अभी हम सब लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो मैं हमेशा पब्लिक डोमेन में जो आज तक हमेशा बोल के आया कि वी आर द लार्जेस्ट स्टेट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. पुराना जब हम लोग जब छोटे थे तो उस वक्त में एक माहौल ऐसे था कि अरुणाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है बोल बोल के. तो ऐसे बोलते बोलते अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी जो ट्राइब्स है, जितने भी जो लीडर्स है, सबका सोच भी काफ़ी छोटा हो गया. तो मैंने ये नैरेटिव को चेंज करने का कोशिश किया. मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश छोटा नहीं है. अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट का वाकई ही सबसे बड़ा स्टेट है. नॉर्थ ईस्ट में जनरली जो मेनलैंड में जो बैठते हैं वो लोग सोचते हैं कि असम ही सबसे बड़ा है, बट दे आर रॉन्ग. हम ही अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है. अभी आसाम अरुणाचल का थोड़ी देर पहले ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि आसाम अरुणाचल का बाउंड्री डिस्प्यूट अभी ऑलमोस्ट सोल्व है. वो सोल्व हो जाने से तो और भी बड़ा होगा हम लोग का बाउंड्री. तो मैं हमेशा तुलना करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है लाइक मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम,
ये 5 स्टेट का साइज का लगभग का अरुणाचल प्रदेश का ये ज्योग्राफिक एरिया है। अगर डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट है अभी का टाइम में, मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम में 11, नागालैंड में 16 और सिक्किम में 6। तो जैसे मैंने जो मेंशन किया कि जो 5 स्टेट्स जो है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये 5 स्टेट का टोटल डिस्ट्रिक्ट मिलाने से 61 डिस्ट्रिक्ट्स है उन लोगों का, 61 डिस्ट्रिक्ट्स। और ज्योग्राफिकल साइज अरुणाचल का लगभग बराबर है। एंड टोपोग्राफिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं बल्कि पूरा कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन अरुणाचल प्रदेश, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। तो फुटिल एरियाज में तो ठीक है, थोड़ा प्लेन एरिया भी है, एक्सेसिबल एरिया है, लेकिन मेजर पार्ट जो है अरुणाचल का जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट में है, उसमें एरिया टोपोग्राफिकली इतना वहाँ पे मुश्किल है। तो हम सबका जो स्टेट का हिस्ट्री आप सबको पता है कि इसका इनिशियली जब 1972 में जो अरुणाचल प्रदेश का नामकरण भी हुआ है और यूनियन टेरिटरी से जो हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया, तो इनिशियली अरुणाचल प्रदेश के पास में हम लोगों के पास में 5 डिस्ट्रिक्ट था अपना 5 मेजर रिवर्स के नाम के ऊपर में। तिरप हो गया, इसके बाद तिरप, सुबनसिरी, सियांग, लोहित एंड कमिंग। तो ये 5 मेजर रिवर्स का ऊपर में ये 5 डिस्ट्रिक्ट बनके तो 1972 से हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया। 1987 में हम लोगों को फुल फ्लेजेड स्टेट में हम लोगों को दर्जा मिला। तो 72 से लेते हुए 1980 और 81 से फर्दर बाइफर्केशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का चैप्टर जो है 1980-81 से शुरुआत हो गया। ऐसे होते होते टिल 2023 वी ऑफिशियली हैव 25 नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट एंड 1 नॉन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जिसको हम लोग कैपिटल एरिया के नाम से जानते हैं। सो ऑफिशियली इस सदन से जो पास हुआ है अभी तक में हमारे पास 25 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो आज ये 2 प्रस्ताव अगर यहाँ से जरूर पास भी होगा क्योंकि आप सब लोग अप्रिशिएट कर रहा है, ये दोनों पास होने से ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश का 25 + 2 27 डिस्ट्रिक्ट होगा और +1 क्योंकि ईटानगर जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो नोटिफाइड नहीं है मगर उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा तो दे के रखा हुआ है। तो मैंने जैसे कहा कि अभी जो ओवर द पीरियड डिस्ट्रिक्ट जो है हम लोगों का बढ़ती गया क्योंकि जब जब सरकार आया तो लोगों का जो एस्पिरेशंस, लोगों का जो चाहत है उसको ही एड्रेस करने का सभी सरकार ने कोशिश किया। और अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो पुराना सरकार भी रहा है दे वर ऑल वेलफेयर गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अपना बीजेपी सरकार भी, लेकिन बीजेपी सरकार जो है 10 कदम आगे जाके वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। इसलिए कई मेंबर्स लोग ने यहाँ जो पार्टिसिपेट किया ओवर द टाइम जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाया पुराना जमाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लोगों को स्ट्राइक करना पड़ा, हड़ताल करना पड़ा, बहुत सारा वेरियस बंद कॉल्स करते हुए तब जाके सरकार को प्रेशर में आते हुए भी इस तरह से डिस्ट्रिक्ट भी बना है। मगर हमारा जो अपना टीम अरुणाचल का सरकार बोलिए या अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार बोलिए, मैंने जैसे कहा कि 10 कदम आगे जाके हम लोग सोचते हैं, कभी भी ऐसे हम पब्लिक को नौबत नहीं देते हैं कि आप बंद कॉल करने तक का क्राइसिस ये होने तक का। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट का आज जो यहाँ सदन में जो चर्चा हो रहा है, एक हो गया बिचुम डिस्ट्रिक्ट। बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जो डिमांड जो है वहाँ के जो ऑनरेबल्स लोग ने भी जो कहा काफ़ी पुराना ये डिमांड है। आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिमांड। 1984 का ये डिस्ट्रिक्ट का डिमांड रहा है। तो ओरिजिनली बिचुम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हो गया आपका अपना बुमडिला कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें नाफरा इंक्लूडेड है और एंटायर बालकपुंग कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके बाद फिर ईस्ट कामेंग से हो गया लाडा और बाना एरिया। तो ओरिजिनल जो 1984 से जो डिमांड जब शुरू हुआ तो ये सब एरियाज था। तो व्हेन आई टुक एज चीफ मिनिस्टर 2016 तो मैंने कहा कि क्योंकि कमिंग बेल्ट का डिमांड है और इस डिमांड को बहुत पहले से ही मैं सुन के आया, वहाँ में जितने भी जो ट्राइब्स है अपना आका हो गया, मिजी हो गया, तो खास करके इन लोगों के साथ में हमेशा हमारा उठना बैठना रहता है। तो उनके साथ भी उनके काफ़ी सारा फंक्शंस में भी मैं पहले अटेंड भी कर चुका हूँ। तो हमें लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का ऊपर में चर्चा होना चाहिए। तो 2016 में ही हमने इसका एक बड़ा डिस्कशन, एक मीटिंग मैंने सेक्रेटरीट में बुलाया जिसमें जितने भी जो कंसर्न एमएलएस है वेस्ट कामेंग का और ईस्ट कामेंग का उसको हमने इनवाइट किया और साथ साथ जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है खास करके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस
अपना मिजी का तरफ से सजलोंग का हो गया, अपना आका का हो गया, तो इन लोगों को भी अपना निशी का तरफ से भी हो गया, सबको बुला के तो हमने डिस्कशन जो है बिचुम डिस्ट्रिक्ट का शुरुआत कर दिया। तो डिस्कशन करते वक्त पता चला है कि ग्राउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने अपील किया कि सबसे पहले आपका ग्राउंड का जो प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको आप लोग एड्रेस करना पड़ेगा। ये सरकार एड्रेस कर नहीं पाएगा क्योंकि इसको कम्युनिटी टू कम्युनिटी लेवल में और विलेज टू विलेज लेवल में बैठ के आप लोग किस प्रकार से कर्व आउट का जो मॉडलिटीज है उसको जब तक आप लोग क्लियर कट सजेस्ट नहीं करेगा, सरकार इसको आगे हम बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये सजेशंस देते हुए मैंने सारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और ऑनरेबल्स लोगों को मैंने कहा कि आप लोग वापस जाके अपना पब्लिक को ये बात जो कहानी बताइए और अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो तब से लेके अभी तक जितने भी जो CBOs है और इस एरियाज के जितने भी जो लीडर्स है, कंसर्न जो MLAs है, तो वो लोग भी इस बिचुम डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में काम करना शुरू कर दिया। अभी नया जो प्रपोजल आज इस सदन में जो आया है वहाँ में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन के साथ यहाँ पे आया है। दिस न्यूली प्रपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये ओरिजिनल जो प्रपोजल है जिसमें मैंने कहा कि एंटायर बालोपुंग कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें शामिल नहीं है। मैंने अपना लेवल में भी बालोपुंग कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ के ऑनरेबल MLA और वहाँ के जितनी भी जो एपेक्स अपना बॉडी है, खास करके अपना आका समाज के जो आका रूसो का जो ये समाज है उनको और जितने भी जो पंचायत लीडर्स के साथ में भी हमारा डिस्कशन हुआ है, तो वो लोग ने कहा कि अभी पहले एक डिमांड जो था वो बिचुम में जाने का था, मगर जिस प्रकार से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेसिबल वेस्ट कमिंग में है वो लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे। उसी प्रकार से अगर ट्राइब का अगर जिक्र किया जाए तो ओरिजिनल बिचुम डिस्ट्रिक्ट में अपार्ट फ्रॉम आका रूसो अपना बुगुन समाज भी था ओरिजिनली, तो बुगुन समाज के साथ में भी चर्चा हुआ, तो दे ऑल्सो फेल्ट कि अभी हम लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे। इसके बाद तीसरा और एक समाज है सरथांग लोग ने तो लिख के भी दे दिया कि हम लोग वेस्ट कमिंग में ही बैठेंगे, बिचुम में नहीं जाएंगे। तो अभी दिस प्रोपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट ये 2 डिस्ट्रिक्ट से कार्प आउट होगा, एक अपना वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से कुल मिला के वहाँ से जो नाफरा सर्कल है, नाफरा सर्कल से ये कार्प आउट होके आएगा। इसका बाद अपना ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से 2 सर्कल, तो कुल मिला के इसमें अभी नाफरा सर्कल का पूरा विलेज वाइज इस बिल में जो प्रपोज बिल है इसमें पूरा डिटेल विलेज वाइज ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल होगा, नाफरा, खजलांग, सरीलांग, लाडा और बाना। तो इन सारा जो 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल को कार्व आउट करते हुए और डिस्ट्रिक्ट प्रपोज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा बिचुम डिस्ट्रिक्ट का नापांगबुंग में वहाँ पे प्रपोज किया हुआ है। एंड द कंसर्न डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कमिंग ने पूरा मेजरमेंट करके एरिया भी जो है पब्लिक ने जो डोनेट किया फ्री ऑफ कॉस्ट 731 एकर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिचुम डिस्ट्रिक्ट के लिए नापांगबुंग में वो लोग ने डोनेट किया हुआ है पूरा एग्रीमेंट के साथ में। वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर ने फॉरवर्ड किया हुआ है और इसका पब्लिक कंसल्टेशन जो है जैसे मैंने कहा कि ऑन ग्राउंड वेस्ट कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से और ईस्ट कमिंग का एडमिनिस्ट्रेशन के ओर से ऑन ग्राउंड सभी लोगों के साथ में इसमें चर्चा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा कलीग मामा नातुंग जी ने बहुत ही डिटेलली यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि लाडा एरिया में और बाना एरिया में, तो वहाँ में कल हम लोग का रिसेंटली जो कैबिनेट हुआ तो वहाँ में भी हम लोग ने चर्चा करके एंड इट वाज माय पब्लिक अनाउंसमेंट ऑल्सो, जो सेपा में एक प्रोग्राम था, सेपा के प्रोग्राम में भी हमने पब्लिक के लिए भी सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया हुआ है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी जेन्यून है, जोग्राफिकली भी ये काफ़ी क्वालिफाई होता है और सोशियो लाइफ में भी ये काफ़ी जेन्यून है। तो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी कहा था कि लाडा सर्कल और बाना सर्कल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रपोज बिचुम डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो जितने भी जो एग्जिस्टिंग जो अभी ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है उसको हम लोग ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करके गवर्नमेंट की ओर से नया इस्टेब्लिशमेंट भी क्रिएट करके देंगे। ये सरकार की ओर से क्लियर कट एक एश्योरेंस हम लोग ने दिया हुआ है नाफरा ये बाना सर्कल के लिए भी और साथ साथ लाडा सर्कल के लोगों के लिए भी। तो इसमें कल मैं देखा तो कोई लोग बनकोल का भी विचार कर रहा था, तो मैंने दोनों MLA को भी बोला कि इसको गवर्नमेंट का जो डिसीजन है क्लियर कट लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली डिप्टी कमिश्नर का इस कमिंग का माध्यम से
कैबिनेट का डिसीजंस और सरकार का जो विजन है वो अपना लाडा सर्कल और बाना सर्कल सभी को कन्वे किया गया है, इसलिए उन लोगों का बंद कॉल भी उन लोग ने कॉल ऑफ भी कर दिया है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग बनाते हैं, बेसिकली हम लोग पब्लिक का डिलीवरी मैकेनिज्म को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग नया डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हम लोग ने हमेशा कोशिश किया कि सरकार जो होता है वो जनता का सेवक होता है, और जनता का सेवक हम लोग बहुत दूर होके बैठेगा तो इसमें डेमोक्रेसी का इथिक्स एंड इथोस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। गवर्नमेंट शुड वर्क वेरी क्लोजली विद आवर ओन पब्लिक। तो उसको ब्रिजिंग करने के लिए हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का माध्यम से लोगों का प्रॉब्लम क्या है उसको सरकार को जानना चाहिए, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के जरिए से सरकार को पता होना चाहिए। तब जाके अरुणाचल प्रदेश डेवलपमेंट भी होगा, और बाद में जाके हम लोगों का अरुणाचल का जो एक विजन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, उसको हम लोग तभी आगे बढ़ा पाएगा जब हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव जो विंग है और भी लोगों का पास में लेके जाने का बाद तब जाके ये सक्सेस हम लोगों को अचीव होगा। कोई मेंबर ने यहाँ पे जिक्र भी किया कि सरकार आपके द्वार और अभी जो चल रहा है सेवा आपके द्वार, ये दो कैंप के माध्यम से वी हैव आई थिंक टच मोर देन 14 लाख बेनिफिशियरीज इन लास्ट 7 years। तो इस प्रकार से एक काफी अच्छा एक ब्रिजिंग हमारा जो ऑफिसर्स लोग हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डेप्यूटी कमिश्नर से लेके जितने भी जो एडमिन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल द लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, उनका माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स के बारे में हो, राज्य सरकार का स्कीम्स के बारे में हो, तो लोगों को ब्रिजिंग करने में काफी सुविधा मिला है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जनता, चाहे आप अर्बन एरियाज का बोलो या चाहे रूरल एरियाज के बारे में बोलिए, तो दे हैव द कॉन्फिडेंस नाउ कि ये बीजेपी का जो सरकार है वो वाकई ही एक अंत्योदया का दृष्टि में चलने वाला एक सरकार है। ये अंत्योदया के लोगों के लिए काम करने के लिए, जो समाज में जो सबसे कमजोर जो होता है उसके लिए काम करने के लिए ये सरकार है। लोगों में काफी कॉन्फिडेंस अभी आ चुका है। सो उसी दिशा से लोगों का एस्पिरेशंस को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का जो प्रपोजल है की पेन्योर का, हमारा ताबातादिर जी और अपना मेरा जो कलीग है अपना तागे ताकी जी, दोनों ने इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में भी बहुत डिटेली बताया। ये डिस्ट्रिक्ट इनिशियली डिमांड तो था अराउंड 1999 का, मगर उतना जोर पकड़ नहीं पाया और 1980s में एक बड़ा क्लैश भी वहाँ पे हुआ था आपातानी समाज और निशी समाज में। तो इस प्रकार से अभी दोनों कम्युनिटीज, खास करके वहाँ पे जो दो मेजर जो कम्युनिटी है, अपना निशी एलाइट सोसाइटी और अपना आपतानी का जो सोसाइटी है TSD टाउन सुपुन दुकुम TSD, तो इन दोनों कम्युनिटी का साथ में हमारा काफ़ी बार बैठक हुआ है। जैसे मैंने कहा हम तो हमेशा टूरिंग में ही रहता है, तो मैं जब भी उस रीजन में जाता हूँ तो दोनों आपतानी के एपेक्स बॉडी TSD और निशी का एपेक्स बॉडी NES, दोनों हमारे साथ आके काफ़ी बार मीटिंग हुआ। हमारे सेक्रेटरीट में भी मीटिंग हुआ। उस जिले में दो विधायक हैं, ताबादेदिर जी और अपना ताकी ताकी जी, तो उन दोनों का साथ में भी हमारा चर्चा होते रहा। तो फाइनली मैंने कहा कि आप लोगों का ये काफ़ी प्रॉब्लम जो है इसको रिजोल्व करना, लॉन्ग टर्म का जो चैलेंजेस जो इश्यूज जो आने वाला है उसको अभी से ही हम लोग विजुलाइज करते हुए इसको अपना सरकार जो है तो हम लोगों को एक सोल्यूशन देना चाहिए, ताकि आने वाला लोग जो है काफ़ी सुखी से जी पाएगा। तो जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, जैसे दोनों मिनिस्टर साहब हमारा जो कलीग है, दोनों ने एक्सप्रेस किया कि जीरो जो हो गया अभी लोअर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, लोअर सुबनसिरी हेडक्वार्टर में वहाँ पे निशी समाज का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, और उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट तो एक ही है मगर निशी एरिया में फिर आपातानी का कहीं भी जगह में प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पे। तो टेक्निकली ये बहुत बड़ा एक इशू है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत बड़ा चांसेस है। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोगों का जो ख्वाहिश जो है वो जेन्युइन है, इसको हम एड्रेस करेंगे। और इसी तरह हमने पब्लिक अनाउंसमेंट भी वहाँ कर दिया, और काफ़ी चर्चा के बाद में और बीच में शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके वहाँ पे फिक्सेशन प्रॉपर वहाँ पे नहीं हुआ था, तो मगर अभी डिस्ट्रिक्ट का भी जो है उसका भी क्लैरिटी वहाँ से आ गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो यचुली एरिया में फिक्स किया जाएगा, और यचुली एरिया में जैसे ताबातेर साहब ने जो कहा कि वहाँ के जो जनता है
तेरगेपिन और सांसद, वहाँ पे लोकल सब एरिया का नाम है। तो कुल मिला के दोनों एरिया में अराउंड 322 हेक्टर्स का जमीन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए एक्चुअली एरिया में वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिया हुआ है। और इस नया जो डिस्ट्रिक्ट में दो जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो बाइफरकेट होगा, 6 एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बाइफरकेट करके की पेनियर डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया जाएगा। नंबर 1 यचुली, 2 यजाली, नंबर 3 परमपुतु, नंबर 4 कोरा, नंबर 5 डीड और नंबर 6 पिस्ताना। तो ये जो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से कॉप आउट करके अभी की पेनियर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर ऑलरेडी हमने मेंशन किया यचुली में होगा, सब एरिया होगा तेरगेपिन एंड समसत। तो इसमें हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और कुल मिला के इसमें जो फिनेंशियल जो लागत है, हम लोग ने कैबिनेट ने ऑलरेडी दोनों नया जो डिस्ट्रिक्ट प्रपोज को केवल सिर्फ नाम के लिए डिस्ट्रिक्ट ही क्रिएट नहीं किया, मगर इनिशियली जो डिप्टी कमिश्नर्स को जो स्टाफ चाहिए उसको भी हम लोग ने डीसी पोस्ट से लेके कुल मिला के 67 पोस्ट फॉर बोथ द न्यूली प्रपोज डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने सैंक्शन कर दिया है, जिनमें से जो पोस्ट का नाम है डिप्टी कमिश्नर 1 नंबर पोस्ट, एडीसी 1 नंबर, एसडीओ 1 नंबर, ईएसी 3 नंबर, सीओ 3 नंबर, एफएओ 1 नंबर, हेड असिस्टेंट 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1, यूडीसी 10, एलडीसी कम ऑपरेटर 7, ड्राइवर 7, स्टोर कीपर 1, पियोन 10, डाक रनर 1, चौकीदार 1, माली 1, स्वीपर 1, पीआई ग्रेड 1, पीआई ग्रेड 2, पीआई ग्रेड 3, एएलसी 10 नंबर। तो कुल मिला के 67 नंबर ऑफ पोस्ट दोनों की पेनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए और साथ साथ बिचुम डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि हमारा ये हमेशा ये मैंने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग सर्कल हो गया, पुराना जमाने में जितने भी जो सर्कल अपग्रेड कर दिया, सर्कल अनाउंसमेंट किया, या इवन डिस्ट्रिक्ट भी जो पुराना जमाने में जो बनाया पेपर में बना के तो दे दिया, मगर विदाउट एनी मैन पावर सपोर्ट। लेकिन हमारा टेन्योर में जितने भी जो सर्कल ऑफिसर का नया बनाया या इवन नया जो डिस्ट्रिक्ट भी जो बनाया, बेयर मिनिमम जितनी भी जो पोस्ट है उसका साथ में हम साथ साथ सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो 67 पोस्ट दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए 67। इसका जो फिनेंशियल का जो इन्वॉल्वमेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट में 3,73,42,920 ये है फिनेंशियल का इन्वॉल्वमेंट इनिशियली। अभी इसका साथ साथ बाकी लाइन डिपार्टमेंट भी अपना अपना जो हेड ऑफ ऑफिसेस वो खोलना अभी नेक्स्ट जो 24 का बाद में नया गवर्नमेंट बनने का बाद में उसको भी हम लोग सैंक्शन करके जाएंगे। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चाहिए उसको भी हम लोग फेज वाइज मैनर में हम लोग बनाते जाएंगे। ये सरकार का एश्योरेंस है ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से। सो कुल मिला के इसमें जो दोनों डिस्ट्रिक्ट का जो फिनेंशियल जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है अभी इनिशियली 7,46,85,840 फॉर बोथ दी न्यूली प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आज ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं जितने भी जो यहाँ पे मेंबर्स लोग पार्टिसिपेट किया उसको दोबारा फिर धन्यवाद देता हूँ। और बाउंड्री इश्यूज में अभी जैसे अभी वहाँ पे की पेनियर में जो अभी अपना ताकि साहब ने जो मेंशन किया कि पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, ठीक है, दोनों ग्रुप ने मान लिया पॉलिटिकल बाउंड्री। उन लोगों का जो अपना एंसेस्ट्रियल जो क्लेम है उसको भी अकॉर्डिंगली किस प्रकार से है उसको भी वो लोग अपना दोनों कमिटी जाके ग्राउंड में जाके वो लोग अपना क्लैरिफाई कर देंगे। और आने वाला दिनों में मैं चाहता हूं कि क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे हो गया है, जिस प्रकार से आसाम अरुणाचल बॉर्डर मोर देन 70 ईयर्स से जो पेंडिंग था उसको भी हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी जो है आजकल हम लोग का सैटेलाइट इमेजिनरी का ओर से भी बहुत रेजोल्यूशन अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज है उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में अच्छा से जितनी भी जो क्लियर कट बाउंड्रीज अरुणाचल में जो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है उसको भी आने वाला दिनों में टेक्नोलॉजी का माध्यम से भी हम लोगों को इसको चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। ये सरकार की ओर से मैं एडिशनल प्रस्ताव भी मैं लोगों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। सो इसी के साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की ओर से आज हम दोबारा एक बार अपील करेंगे सभी मेंबर्स को कि ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट आज जो सरकार ने लेके आया है बहुत ही जेन्युइन है। हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जो आका समाज है, हमारा जो
मिजी समाज है और हमारा मिशी समाज है, उन तीनों समाज के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और की पेनियर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा निशी समाज और अपतानी समाज के लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस बिल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और एडवांस में माननीय स्पीकर साहब, मैं अपने सरकार के ओर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से मैं सभी डिस्ट्रिक्ट, अभी जो दोनों प्रपोज जो डिस्ट्रिक्ट पास होने वाला है, बिचुम डिस्ट्रिक्ट और की पेनियर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और साथ साथ मैं वादा भी करता हूं कि इलेक्शन के बाद में 2024 को जो नया चैप्टर हम लोग जो शुरुआत करेंगे, वहां पे और भी हम लोग मैन पावर और एलाइड डिपार्टमेंट्स भी हम लोग स्थापना करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने समय हमें दिया है। थैंक यू। जय हिंद। Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. We will take up clause by clause for consideration of the bill now. The question is that the clause 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 3 stands part of the bill. Now that the clause 1, enacting formula and the short title and the commencement do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the short title and the commencement stands part of the bill. Honorable Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Reorganization of District Amendment Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The Arunachal Pradesh Reorganization of Districts Amendment Bill 2024 is passed. Now I adjourn the House to meet again tomorrow at 10 a.m. on the 9th of February 2024. Thank you.